Today we will discuss about different types of cells. Already we have discussed types of cells on the basis of power of a division. On the basis of a power of a division, cells are classified into 4 types. Already we knew it. First one is, that is undifferentiated cell. Second is differentiated cell. Third is de-differentiated cell, and last one is re-differentiated cell. These are the 4 types of cells on the basis of a power of a division. Already we have discussed it. This cell which is continuously dividing is known as undifferentiated cell. The cell which has lost the power of a division, that is differentiated cell. If the differentiated cell in future will again start dividing, then that is known as a de-differentiated cell. And if the de-differentiated cell will again lose the power of a division, that is known as a re-differentiated cell. Already we have discussed it. Clear? Today we will discuss about how many types of cells are present on the basis of nucleus. Types of cells on the basis of nucleus. Cells are classified into 3 types on the basis of nucleus. Okay. What are they? One is prokaryotic cell. Second one is eukaryotic cell. Third one is mesokaryotic cell. So on the basis of nature of nucleus, the cells are classified into 3 types: prokaryotic cell, eukaryotic cell, mesokaryotic cell. What is a prokaryotic cell? It is composed of 2 words. One is pro, another is karyotic. Pro means, just hear me, pro means primitive, karyotic means nucleus. Always karyotic means nucleus. It is a Greek word. Karyotic is derived from a Greek word. That Greek word is karyon. Okay. Let me explain this meaning of a prokaryotic cell. Pro means primitive. Primitive means old. It is opposite to advanced. It is opposite to modern. So opposite to modern is known as a primitive or old. Karyotic means nucleus. It is old nucleus. It is a primitive nucleus. It is not advanced nucleus. It is not a modern nucleus. Then that cell is called a prokaryotic cell. What is primitive nucleus? Means nucleus is present, but the nucleus is not surrounded by nuclear membrane. Again I am repeating. On the basis of nature of a nucleus, on the basis of that is the composition of a nucleus, on the basis of habit of a nucleus, the cells are classified into 3 types. One is a prokaryotic cell, another is a eukaryotic cell, third one is a mesokaryotic cell. The cell in which nucleus is not surrounded by nuclear membrane, that is known as prokaryotic cell. The cell in which nucleus is present, but that nucleus is not surrounded by nuclear membrane. Okay, that cell is known as a prokaryotic cell. Okay, the cell in which nucleus is present, okay, but that nucleus is not surrounded by nuclear membrane, that is surrounded by nuclear membrane, is known as a eukaryotic cell. जो cell रो चारिपटे जाक nuclear membrane अछि, cell, you know, this is the structure of a cell, you know it. Inside this cell, this entire substance is called protoplasm. That protoplasm is divided into 2 parts. Okay, आ भितर जहाँ रहला सब जगह protoplasm.
ओके ताको दी भाग विभक्त कराई. This one is known as nucleus and this is the cytoplasm. Inside this cell ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ. ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି. ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ. So it is having two parts. This one is a cytoplasm and this one is what? Nucleus. So it is having two parts, cytoplasm and a nucleus. Clear? This nucleus is surrounded by a membrane. This membrane is known as a nuclear membrane. Like a cell has a membrane, that is known as a cell membrane. Okay. Likewise, the nucleus has a membrane, means covering. Okay. The cell has a covering, that covering is called a cell membrane. Likewise, the nucleus has a covering, that covering is called a nuclear membrane. The cell in which nucleus is present, means this one is present. Okay. But it is not having a membrane. Okay. Nucleus अच्छी किंतु तार covering नहीं, membrane नहीं, means nuclear membrane is absent. Then that cell is called prokaryotic cell. Cell in which nucleus is present and nuclear membrane is present, means nucleus is surrounded by a covering nuclear membrane. Then that cell is known as eukaryotic cell. Okay. This cell in which nucleus is present, nuclear membrane is present, but it shows characters of a prokaryote. Then that is known as a mesokaryotic cell. Cell nucleus अच्छी किंतु nuclear membrane नहीं, that is prokaryotic. Cell nucleus अच्छी, nuclear membrane अच्छी, that is eukaryotic. Nuclear membrane माने the covering of the nucleus. Okay, the covering or the envelope that surrounds nucleus. Okay, ताले एटा होची जेमति cell membrane, एटा होची nuclear membrane. जोटी nuclear membrane नहीं, that is prokaryotic cell. जो nuclear membrane अच्छी, that is eukaryotic cell. Okay, जोटी the cell in which, okay, the nucleus is surrounded by a nuclear membrane. Okay, but the DNA is not associated with the histone protein. A protein is present, that is known as a histone protein. Okay, that histone protein is found in case of a eukaryotic cell. Okay, that is absent in case of prokaryotic cell and that is present in case of a mesokaryotic cell. So an intermediate cell is present, a transitional cell is present. Okay, that is having character of both prokaryotic and eukaryotic, that is known as a mesokaryotic cell. Again I am repeating, जो सेल रे न्यूक्लियस चारिपटे जाक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही, डीएनए सहित गोटे प्रोटीन एसोसिएटेड हेकी थाए, ता नाउ हिस्टोन प्रोटीन. काहे के एसोसिएटेड थाए? ओके, ताको हम डिस्कशन करबा. हिस्टोन प्रोटीन र काम कोन हम तो डिस्कशन करबा. जोडी हिस्टोन प्रोटीन नाही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही, दैट सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल. जोडी सेल रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि, हिस्टोन प्रोटीन अछि, दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल. Okay, third type of cell is mesokaryotic cell. Okay, it is intermediate, means it is a transition between prokaryotic cell and what? Eukaryotic cell. Okay, this cell which has nuclear membrane like eukaryotic cell. This cell which is devoid of histone protein. Okay, like what? Prokaryotic cell. Then that cell is known as a mesokaryotic cell. हमें किसी एग्जांपल दबा. The examples of prokaryotic cell are bacteria. Blue-green algae. Nowadays, it is no more known as the blue-green algae. Its name is changed. It is known as the cyanobacteria. Another is mycoplasma. This is the smallest bacteria. These are different examples of what? Prokaryotic cell. Okay, bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, PPLO. Okay, PPLO. These are different examples of prokaryotic cell. Eukaryotic cell, example is a plant and animal. Plant cell and animal cells, they are examples of what? Eukaryotic cell. And third is mesokaryotic cell. Example is dinoflagellates. Dinoflagellates are particular types of protista. What is protista? Now these are single celled unicellular organisms.
single celled unicellular organisms are known as what? Protista. Okay, single cell unicellular eukaryotic organisms are known as a protista. Dinoflagellate is an example of a mesokaryotic cell. Okay, now in this class, okay, we will discuss about prokaryotic cell and what? Eukaryotic cell. Clear? Coach. Before discussing about prokaryotic cell, let us see the structure of a prokaryotic cell. Okay, let us see the structure of prokaryotic cell. How the prokaryotic cell looks like. Prokaryotic cell means I have given the example, that is bacteria. Okay, how the bacteria looks like, how it is structure looks like. After knowing the structure, bacteria structure जानला ପରେ हमको easy होबो one by one ताको discussion करिया पेंगे. Okay, so now I am showing you the structure of what? Prokaryotic cell. Okay, that is the structure of a prokaryotic cell. Now this I am giving you the structure, I am showing you the structure of what? Prokaryotic cell. The prokaryotic cell or bacteria is having many coverings. The outermost covering is known as glycocalyx. The secondmost covering is known as cell wall, and the third or innermost covering is known as, okay, that is cell membrane or plasma membrane. Okay, so the bacteria have three coverings. Bacteria, okay, is plural, bacterium is singular. The bacteria have three coverings. Outermost covering is known as the glycocalyx, that is the outer one. The second one is known as the cell wall, and the third one is known as a cell membrane. When three coverings are present, that is a glycocalyx, cell wall and cell membrane, then that is known as cell envelope. So bacteria have a cell envelope. That cell envelope is absent in case of what? Eukaryotic cell. In case of eukaryotic cell, cell wall is present, cell membrane is present. In case of plant cell, in case of animal cell, only cell membrane is present. In case of bacteria, means prokaryotic cell, three coverings are present. Outermost covering is called glycocalyx. Second covering is called cell wall. Third covering is called cell membrane. So three types of coverings are found in case of bacteria. Outer is glycocalyx. That glycocalyx is of two types. If the glycocalyx is it is very thick and hard, then it is known as capsule. If it is very thin, soft, then this is known as a slime layer. Slime layer. Clear? Okay. Outermost covering glycocalyx, it is of two types on the basis of composition. If the glycocalyx is very rough and tough, it is very thick and tough, then this is known as a capsule. Bacteria having capsule known as a capsulated bacteria. Bacteria having capsule known as a capsulated bacteria. That capsulated bacteria are generally pathogenic, means infectious. Bacteria, those are having capsules, they cause diseases in plants and animals, so they are what? Infectious. Bacteria in which the glycocalyx is very thin and soft, then that is known as what? Slime layer. Slime layer. Clear? The second one is the cell wall. This is cell wall. On the basis of a composition of a cell wall, bacteria are of two types. If the bacteria is having only single layered thick cell wall, then the bacteria is known as gram positive bacteria. Christian Gram, a famous microbiologist, जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरिया ऊपर स्टडी करती कहते माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ही वाज ए फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ओके, on the basis of a structure of a cell wall, he classified, this Christian Gram
he classified bacteria into two types. One is a gram positive bacteria, another is a gram negative bacteria. Gram negative bacteria. Okay. Third one is cell membrane. This cell membrane is its composition is the same in case of a prokaryotic cell, in case of a eukaryotic cell, in case of a mesokaryotic cell. Means this cell membrane is composed of lipid and a protein. Bilayer lipid is associated with different types of proteins. Those lipid and protein are present in cell membrane of plant cell. That lipid and protein are present in cell membrane of animal cell. That lipid and protein are present in cell membrane of what? Prokaryotic cell or bacteria. Okay. So these are the structure of what? Cell envelope. These three layers collectively known as the cell envelope. Okay. The outer is glycocalyx, inner is cell wall, third is cell membrane. Okay. And I told you glycocalyx is of two types, that is capsule and a slime layer. Cell wall, on the basis of a cell wall, bacteria are of two types. जदि बैक्टेरिया रे केवल गोटे लेयर रो सेल वॉल थिबो, ओके, जोटा ठीक हेइतिबो, आमे डिटेल पढिबा सेल वॉल पर पढिबा, जदि ठीक हेइतिबो तले ताको आमे कहबा कोन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया. काहे कि ग्राम ना जन साइंटिस्ट क्रिस्टियन ग्राम से प्रथम थरो पेंगी बैक्टेरिया को स्टेनिंग करेले. स्टेनिंग माने कलरिंग करेले. कलरिंग करी कि देखैले जे बैक्टेरिया दुई प्रकार. जो बैक्टेरिया क्रिस्टियन ग्राम जो कलर देथिले से कलर को रखिला ताको आमे कहले ग्राम पॉजिटिव. जो बैक्टेरिया कलर को फेड करे देला, कलरलेस हो गला, सेटा होचे ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया. ओके. ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया केवल सिंगल वॉल रहिछि सेल वॉल. ओके. ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया दुईटा सेल वॉल रहिछि, गोटे होछि आउटर सेल वॉल, आउट होछि इनर सेल वॉल. ओके. तो क्वेश्चन पचरिबो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टेरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इज डन ऑन द बेसिस ऑफ से ग्लाइकोकालिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. देन आंसर शुड बी व्हाट? सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन ये केवल गोटे स्ट्रक्चर बैक्टेरिया रो जहार स्ट्रक्चर रिजेम्बल करूची, मीन्स मिलूची इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. एटा होची मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मेडिकल रे क्वेश्चन पचारे. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हुज स्ट्रक्चर इज सिमिलर बोथ इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. हुज स्ट्रक्चर इज सिमिलर, दैट इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. ओके. इन केस इट्स कंपोजिशन इज यूनिवर्सल. प्लांट एनिमल बैक्टेरिया जोठी भी जहा हो ना कहीं समस्त क्षेत्र में सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन समान, आउ न समस्त अलग अलग. इन केस ऑफ प्लांट सेल दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज होची गोटे प्रकार कोन? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट. इन केस ऑफ बैक्टेरिया दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन माने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. ओके. प्लांट सेल रे केवल सेल वॉल टा होची कोथु तयारी? कार्बोहाइड्रेट रो तयारी. इन केस ऑफ बैक्टेरिया it is composed of a protein and a carbohydrate. Clear? In case of animal cell, cell wall nahi. ताले plant cell और bacteria cell means eukaryotic cell और prokaryotic cell सेमानंकर composition vary कला कोथरे? cell wall रे. eukaryotic cell रे cell wall composition होची cellulose, prokaryotic cell रे cell wall composition होची कोन? that is peptidoglycan. किंतु ए गोटी structure prokaryotic cell हो कि eukaryotic cell हो जोथरे तार composition होची समान. कोन ना? prokaryotic cell membrane is composed of lipid and protein. Eukaryotic cell membrane is also composed of lipid and protein. Okay. Composition is exactly same, किंतु structure टिके differ करछि. हम त डिस्कशन करबा, इन डिटेल पढिबा. क्लियर? ताले वर्तमान मु तुमको देखौछि ए जो टिके आईडिया दे देली. तीन प्रकार सेल अछि: prokaryotic cell, eukaryotic cell, mesokaryotic cell. जो सेल रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि, that is prokaryotic cell. न्यूक्लियस चारिपटा जो मेम्ब्रेन सेटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. that is जो सेल न्यूक्लियस चारिपटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि, that is eukaryotic cell. जहार न्यूक्लियस चारिपटा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही सेटा होची prokaryotic cell. दिटा जिंस मेन. तले prokaryotic cell और eukaryotic cell आर मेन डिफरेंस होची जहार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि सेटा eukaryotic cell, जहार नाही सेटा होची prokaryotic cell. और थर्ड टाइप ऑफ सेल रहला हम कहली mesokaryotic cell. हमर जनरली पढा होची +2 दुई प्रकार सेल, गोटे prokaryotic cell और गोटे mesokaryotic cell. But we will discuss about 3 types of cells in detail discussion करिबा. गोटे prokaryotic cell जहार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही, न्यूक्लियस चारिपट जाको. सेकंड इज eukaryotic cell in which nuclear membrane is present around nucleus, and I gave the example prokaryotic cell. A simple example होची bacteria.
eukaryotic cell example होची plant cell and animal cell. कारण in plant cell around nucleus nuclear membrane is present. In animal cell around nucleus nuclear membrane is present. जेहेतु plants and animal cell nuclear membrane अच्छी, therefore there are examples of what? Eukaryotic cell. In bacteria, in blue green algae, in case of mycoplasma, mycoplasma होची सबठारु छोटो बैक्टेरिया. In case of mycoplasma, okay, एमानकर nuclear cerebral जाक nuclear membrane नहीं, therefore there are examples of what? Prokaryotic cell. Third मु कहली कोन mesokaryotic cell. कोन mesokaryotic cell ना से prokaryotic cell and eukaryotic cell दी जनकर character को show करूची. So it is a one type of medium cell. It is in between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Mesokaryotic cell is showing the character of a prokaryotic cell. That cell is also showing the character of a eukaryotic cell. Okay, prokaryotic cell character कौन show करूची ना like a prokaryotic cell, in mesokaryotic cell histone protein is not present in DNA. Like eukaryotic cell, okay, the nucleus has a membrane that is known as what? Nuclear membrane. द्विजनकर character show करथार तो कमे कहूची mesokaryotic cell. Example होची that is what? Dinoflagellates. Dinoflagellate is a type of what? Protein. Sorry, dinoflagellate is a type of what? Protista. Okay, so these are three types of cells. बर्तमान आम डिटेल डिस्कशन करिबा प्रोकैरियोटिक सेल विषय. ओके, फास्ट प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कशन करिबा कारण सेटा होची सबटु सिंपलेस्ट सेल. प्रोकैरियोटिक सेलटा होची यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक सेलटा होची मल्टीसेलुलर. यूकैरियोटिक सेल मे बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, मोस्टली होचंदी मल्टीसेलुलर. ओके, मेसोकैरियोटिक सेलटा होची यूनिसेलुलर. आउथरे म कहि दोची तीन प्रकार सेल रहिला ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. सो तीन प्रकार सेल भितर फास्ट होची प्रोकैरियोटिक सेल. जितिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल से माने सोचुंदी यूनिसेलुलर. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माने यूनिसेलुलर. जोडे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेटा आइदर यूनिसेलुलर हे परिबे और मल्टीसेलुलर हे परिबे, किंतु मेनली होचुंदी मल्टीसेलुलर. आ जो थर्ड रहला मेसोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेटा होची यूनिसेलुलर. तले फर्स्ट हम डिस्कशन करिबा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया. वर्तमान मु तुमको आउट देखौची स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर जानिला पारे कौन कौन सब जिनस रही. ओके, आम स्ट्रक्चर गुड़ा देखा, देखला वन बाय वन मु स्ट्रक्चर को कौन करेबी डिस्कशन कर जीवी. क्लियर? बर्तमान देखो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया. आगो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर देखो. मु कहितले आउटर मोस्ट कवरिंग होचे ग्लाइकोकैलिक्स. देखौची आउटर मोस्ट कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, जे कोन करची बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दोची. आउटर मोस्ट कवरिंग ता बाहर रहिची, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दोची. सेकंड देखो, सेकंड देखला सेल वॉल. सेल वॉल सेकंड कवरिंग सेल वॉल. आगो से पिक्चर को भले कि देखि तो देखिला हमरा आईडिया आसी जो तापर वन बाय वन हम डिस्कशन करिवा. ओके, फर्स्ट होला ग्लाइकोकैलिक्स जे बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन दोची. सेकंड होची सेल वॉल जे बैक्टीरिया को मध्ये कोन दोची स्ट्रेंथ दोची. सेल वॉल थिबारु बैक्टीरिया स्ट्रांग होई रहिची. जदि बैक्टीरिया सेल वॉल को काट दो बैक्टीरिया मरि जिवो. थर्ड कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन. थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, जो सेल मेम्ब्रेन दीटा पार्ट अछि. गोटे पार्ट रे वाटर मिसी परिबो तो कमे कहबा पोलर पार्ट. गोटे पार्ट रे वाटर मिसी परिबो तो कमे कहबा नॉन पोलर पार्ट. दीटा पार्ट अछि सेल मेम्ब्रेन रे. ओके, सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन रहिछि इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. मु ऑलरेडी कहली प्रोटीन रे दीटा पार्ट अछि. गोटे होछि पोलर पार्ट जोथरे वाटर मिसी परिबो
और जो नॉन पोलर पार्ट जोटा वाटर मिसी परिबो नाही ए जो सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन रही तार काम होची बाहर जो जिनसटा अच्छी तो भितर को छाड़िबो भितर जो जिनसटा अच्छी तो बाहर को छाड़िबो एमती तीन प्रकार कवरिंग अच्छी से तीन प्रकार कवरिंग को आम कंप्लीटली कहूँ कौन सेल इनवॉल्व ओके ये जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन अच्छी ओके प्रोटीन काम होची कौन से कौन करिवो बाहर भितर को जिनस छाड़ी परिबो भितर बाहर को छाड़ी परिबो प्लस कौन करि परिबो रिसेप्टर भलिया काम करिवो जो बाहर जिनस अछि ताको धरिबो रिसेप्टर भलिया काम करिवो भितर को छाड़िबो ओके प्लस कौन करिवो ता भितर जो प्रोटीन गुडाक ओके जो गुडाक जो जिनस गुडाक जिबासा करि परनांती जोडाक नॉन पोलर पोलर ताको मते कौन करिवो भितर को छाड़िबो ओके तापरे बैक्टीरिया भितर जो जिनस अछि टोटल टा सेटा होछि साइटोप्लाज्म ऑलरेडी मु कहिछि सेल भितर जहा अछि टोटल टा होछि साइटोप्लाज्म भितर डिफरेंट स्ट्रक्चर अछि गोटे होछि फॉस्फेट ग्रान्यूल ओके ये एमिति गोटे स्ट्रक्चर जोथरे फॉस्फेट स्टोर होई थाए ग्रान्यूल माने गोले स्ट्रक्चर स्पेरिकल स्ट्रक्चर ओके थ्री टाइप्स ऑफ spherical structures are present inside the cytoplasm one is the phosphate granule जो phosphate granule भितर phosphate store होई रहिछि ओके another is glycogen granule जो स्ट्रक्चर भितर ग्लाइकोजेन और कार्बोहाइड्रेट स्टोर होई रहिछि ओके आमर जेमति आमर इन केस ऑफ अस आमर गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अछि जोतरे फूड स्टोर होई रुहे दैट इज लिवर इनसाइड लिवर द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन ओके आम बॉडी रे एक्सेस फूड गुडा ग्लाइकोजेन अवस्था स्टोर होची का भितर लिवर भितर बैक्टीरिया सेमिति कोनोसी स्पेशल स्ट्रक्चर नाही सेति कि तार फूड स्टोर होबा पे कि छोट छोट गोले गोले स्ट्रक्चर रहिছে जो स्ट्रक्चर भितर फॉस्फोरस स्टोर होची गोली स्ट्रक्चर भितर ताको हम कहछे फॉस्फोरस ग्रान्यूल ओके फॉस्फोरस ग्रान्यूल रे फॉस्फोरस स्टोर होची जोथरे एनर्जी मिलुची बैक्टीरिया को जो एनर्जी मिलुची फॉस्फेट ग्रान्यूल ओके बैक्टीरिया मध्ये कोन करछि किछि बैक्टीरिया खाद्य निजे तयारी करूछंती कारण बैक्टीरिया दुई प्रकार गोटे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और गोटे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑलरेडी ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक मु आगुरु बतै देछि द बैक्टीरिया व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड द बैक्टीरिया व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया द बैक्टीरिया हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तो दुई प्रकार बैक्टीरिया अच्छे जो बैक्टीरिया को खाद्य तैयारी करछंती खाद्य को से माने ग्लाइकोजेन फॉर्म रे किछि स्पेरिकल स्ट्रक्चर भितर स्टोर की रखुछंती ता ना होछि ग्लाइकोजेन ग्रान्यूल ताले हम कोन कहले फॉस्फेट ग्रान्यूल फॉस्फेट स्टोर रहिछि दैट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बैक्टीरिया सब काम करिया पे जो एनर्जी दरकार है ताको मिली जाउछि फॉस्फेट ग्रान्यूल बैक्टीरिया जो एक्सेस खाद्य को स्टोर करि रखुछि ओके ग्लाइकोजेन ग्रान्यूल भितर आउट होछि सियानोफाइसिन ग्रान्यूल कोन हमें कहले बैक्टीरिया रो मु डिफरेंट एग्जांपल देली ओके लाइक कोन ना गोटे होची प्रोकैरियोट्स रे डिफरेंट एग्जांपल देली गोटे होची बैक्टीरिया गोटे होची ब्लू ग्रीन एल्गी जोटा को ब्लू ग्रीन एल्गी तार कॉमन ना होची सियानो बैक्टीरिया ताको मध्ये कहवा जे सियानोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी इज आल्सो नोन एज सियानोफाइसी ओके ताले सियानोफाइसी भितरे जो प्रकार जो स्ट्रक्चर रहिछि जो ग्रानुलर स्ट्रक्चर रहिछि तो हम कहूचे सियानोफाइसिन ग्रानुल एमति तीन प्रकार स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल भितर अछि गोटे जे ग्लाइकोजेन ग्रानुल गोटे होछि फॉस्फेट ग्रानुल और होछि सियानोफाइसिन ग्रानुल क्लियर वर्तमान मु तुमको टिके डिफरेंस देखैबी बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट यूकैरियोटिक सेल one is a prokaryotic cell another is a eukaryotic cell first difference kon the cell where nucleus is not surrounded by nuclear membrane प्रथम जिंस होची एथरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट अछि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट आगोटे डिफरेंस जानि जबा तापर हम प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल रो ओके डिटेल तांग स्ट्रक्चर बुझिबा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट न्यूक्लियस चारि पड़ जाको In case of eukaryotic cell, nuclear membrane is present. Around the nucleus, nuclear membrane is present. Clear? In case of prokaryotic cell, nuclear membrane is absent, but nucleus is present. मतलब भले कि सुनो prokaryotic cell or bacteria रे nuclear membrane is absent, but nucleus is present. Okay? In case of a bacteria, that is known as nucleus.
that is also known as a chromosome, that is also known as a DNA. प्रोकैरियोटिक सेल रे और बैक्टीरिया रे जोटा को न्यूक्लियस सेटा को क्रोमोसोम सेटा को डीएनए किंतु इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ओके इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल दिस इज nucleus, inside nucleus this structure is known as मु डिस्कशन करिवि ई मेसोकैरियोटिक सेल मु इन डिटेल डिस्कशन करिवि आगो टिके डिस्कशन कर दोछि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ओके प्रोकैरियोटिक सेल कोन यूकैरियोटिक सेल कोन ता भीतर आईडिया दे देबी तापर मेसोकैरियोटिक सेल को हम डिटेल डिस्कशन करिबा मेसोकैरियोटिक सेल होछि गोटे सेल जहार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दि जनकर कैरेक्टर रखिछि जेमति यूकैरियोटिक रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि मेसोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि जेमति प्रोकैरियोटिक सेल रे हिस्टोन प्रोटीन नाही मेसोकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन नाही दि जनकर कैरेक्टर से समान रखुथिबारु तको में कोन कहउछे मेसोकैरियोटिक सेल हम पढिबा तको इन डिटेल एटा होछ न्यूक्लियस न्यूक्लियस भीतर होइछ क्रोमोसोम क्रोमोसोम भीतर होइछ गोटे थ्रेड वाला स्ट्रक्चर दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट डीएनए सो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट okay inside nuclear membrane chromosome is present inside chromosome DNA is present so three different structures are found in case of what eukaryotic cell nucleus this entire structure is called what nucleus inside nucleus this structure is known as the chromosome inside chromosome this thread is known as the DNA so three different structures are found in case of eukaryotic cell but in case of prokaryotic cell a thread like structure is present this thread like structure is known as the nucleus this is also known as the chromosome this is also known as the DNA so no difference is found between nucleus chromosome and DNA therefore nucleus is also known as chromosome is also known as the DNA in case of what prokaryotic cell किछि डिफरेंस नाही जोटा न्यूक्लियस सेटा क्रोमोसोम सेटा डीएनए किंतु तीनटा अलग अलग इन केस ऑफ व्हाट यूकैरियोटिक सेल ताले एई सब जिंस थिबारु आमे कहूचे प्रोकैरियोटिक सेल रे जो न्यूक्लियस रहिछि दैट इज व्हाट ओल्ड न्यूक्लियस माने तार किछि एडवांस हेइनी से सेमते अवस्था रहि जायछि डेवलपमेंट किछि हेइनी किंतु यूकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियस ता भीतर गोटे स्पेशल स्ट्रक्चर जते हम कहूचे क्रोमोसोम ता भीतर गोटे स्पेशल स्ट्रक्चर जते हम कहूचे डीएनए तीनटा को सब अलग अलग हेकि क्लियरली जणा पडुछि सेमानक भीतर डेवलपमेंट हे जायछि ओके सेमाने गोटे गोटे डिस्टिंक्ट यूनिक स्ट्रक्चर किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे जेमति थिला से न्यूक्लियस अछि ओके ताको हम कहउछ क्रोमोसोम ताको मध्ये कहउछ हम कोन डीएनए क्लियर ताले सेकंड पॉइंट इज इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम एंड डीएनए आर सेम दे आर ऑल synonymous means same जोटा को न्यूक्लियस दैट इज क्रोमोसोम दैट इज डीएनए मींस थ्री डिफरेंट नेम्स but one structure three different names but one structure therefore they are synonymous this question will ask ये क्वेश्चन में परीक्षा पचरिबो ओके इन व्हिच सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम एंड डीएनए आर थ्री synonymous structure means गोटे स्ट्रक्चर किंतु तीनटा को कोन तीनटा का ना थ्री डिफरेंट नेम्स ऑफ वन स्ट्रक्चर सो दे आर synonymous in case of eukaryotic cell nucleus chromosome and what DNA they are three different structures nucleus chromosome DNA तीनटा को अलग अलग स्ट्रक्चर सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट कौन पिले ना in case of prokaryotic cell the name of the nucleus or the name of the chromosome or the name of the DNA जोटा का न्यूक्लियस है सेटा क्रोमोसोम सेटा डीएनए नेम ऑफ द न्यूक्लियस और नेम ऑफ द क्रोमोसोम और नेम ऑफ द डीएनए is known as the nucleoid or otherwise known as a genophore in a prokaryotic cell or a bacteria okay name of the nucleus or chromosome or a DNA is known as a nucleoid or a genophore this is very important one name of the nucleus of a bacteria is known as dash that is nucleoid or genophore name of the chromosome of the bacteria is known as what that is nucleoid or genophore okay name of the DNA of the prokaryotic cell or bacteria is known as what nucleoid or genophore eta question पचरुची okay nucleoid or genophore nucleoid or that is also known as a genophore ताले prokaryotic cell रे जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम और डीएनए रहिछि
समस्तंकर ना होची न्यूक्लियोइड और जीनोफोर नो सच नेम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियोइड और जीनोफोर एमिति किछ ना नाही किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे से नाटा रहिछि दैट इज नॉट द न्यूक्लियोइड और व्हाट जीनोफोर ओके दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वन आमे कहिले इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल रे डीएनए रहिछि सेटा मध्ये न्यूक्लियस सेटा मध्ये क्रोमोसोम दैट डीएनए is not associated with a protein that protein is known as a histone protein DNA रे histone protein लागि गिरे नाही किंतु यूकैरियोटिक सेल रे DNA is associated with histone protein बहिरे लिखि देछि जे प्रोकैरियोटिक सेल रे DNA is not associated with histone protein in case of eukaryotic cell DNA is associated with what histone protein काहे कि एठी नाही काहे कि अछि हम डिस्कशन करिबा आगो डिस्कशन कर दवा काहे कि यूकैरियोटिक सेल रे हिस्टोन प्रोटीन अछि डीएनए रे दिस वन इज वेरी इंपोर्टेंट हमें कहले प्रोकैरियोटिक सेल हो कि यूकैरियोटिक सेल हो बोथ आर हैविंग डीएनए किंतु फरक कोन ना प्रोकैरियोटिक सेल जो डीएनए ता अछि ताको मध्ये हम न्यूक्लियस कहउछे ताको मध्ये हम क्रोमोसोम कहउछे किंतु यूकैरियोटिक सेल रे डीएनए न्यूक्लियस और क्रोमोसोम तीनटा को अलग अलग स्ट्रक्चर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहउची प्रोकैरियोटिक सेल इन प्रोकैरियोटिक सेल DNA is not associated with histone protein. In case of eukaryotic cell, DNA is associated with histone protein. बहिरे लिखि देला आमे ताको घोषि देले किंतु आमे आको बुझिबा काहे कि प्रोकैरियोटिक DNA हिस्टोन प्रोटीन नाही काहे कि यूकैरियोटिक DNA हिस्टोन प्रोटीन अछि आको डिस्कशन करिबा तले एबे डिस्कशन करबा यूकैरियोटिक सेल रे इन यूकैरियोटिक सेल रे व्हाई DNA is associated with histone protein बतन डिस्कशन करिबा क्लियर in our cell ammo katha kohuche in human being the nucleus of the diameter okay sorry the diameter in our case the diameter of the nucleus is only 0.4 micrometer I am giving the example of human nucleus in our case our nucleus has a diameter of 0.4 micrometer inside that diameter of nucleus a DNA is present having length of this is what diameter of a nucleus okay a DNA is present having length of 2 meter amar jo nucleus achi okay ta diameter ho matra 0.4 micrometer but the DNA that is present inside what nucleus that is having what length of 2 meter dekho okay structure of DNA दिया हिची structure of DNA जो DNA रो जोटा लिनियर हिक रहिछि आम क्षेत्र रे ए जो डीएनए टा लिनियर माने स्ट्रेट रहिछि जदि हम देखिबा तर स्ट्रक्चर ता हबो 2 मीटर पाखा पाखी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर ओके जो डीएनए टा देखिछि गुडे हिक रहिछि कॉइल हिक रहिछि त हम कहछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दीटा सूता जेंति गुडे हिक रुहे सेंति गुडे हिक रहिछि त हम कहछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए हमर यूकैरियोटिक सेल रे सेटा रहिछि का भीतर न्यूक्लियस भीतर ए जो डीएनए टा न्यूक्लियस भीतर रहिछि जो न्यूक्लियस रो डायमीटर होछि मात्र 0.4 माइक्रोमीटर तार भीतर जो डीएनए रहिछि एते बड़ डीएनए रहिछि जार लेंथ होछि 2 मीटर हाउ इट इज पॉसिबल एमिति केमिति संभव हबो एते बड़ डीएनए गोटे बहुत छोट न्यूक्लियस भीतर रहिछि संभव केमिति हिछि किंतु रहिछि मोटे एग्जांपल देबी ए टेंपल हैविंग हाइट ऑफ 5 फीट आगो गोटे एग्जांपल मु दोछि ए टेंपल हैविंग हाइट ऑफ 5 फीट inside which a god or goddess is present having height of 50 feet is it possible मंदिर रो उच्चता होची 5 फुट ता भीतर जो ठाकुर अछंती तार उच्चता होची दैट इज 50 फुट संभव नुहे ये मध्ये संभव होता नुहे कारण न्यूक्लियस माने घरटा न्यूक्लियस होची मात्र 0.4 माइक्रोमीटर ता भीतर जो डीएनए रहिछि तार होची 2 मीटर संभव होता नुहे जेमती गोटे 5 फुट मंदिर भितरे गोटे 50 फुट रो ठाकुर रही परिबे नाही सेमती बहुत छोट न्यूक्लियस भितरे एते बड़ डीएनए जगह हवा कथा नुहे किंतु जगह हेछि केमिति हेछि आसो ताको डिस्कशन करिबा क्लियर डीएनए रो फुल फॉर्म होउछि पिले डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए क्लियर okay that DNA is composed of acid that acid is known as a phosphoric acid H3PO4 मत भले कि बुझ मोर क्वेश्चन होउछि जेते बेले गोटे छोट मंदिर भितर गोटे बड़ ठाकुर जगह हो नांती
सेमती एत बड़ छोट न्यूक्लियस भितर एत बड़ डीएनए केमती जगह होची किंतु रहुची जगह होची त केमती होची आमे ताको डिस्कशन करछे क्लियर आमे आगो डीएनए विषय जानिबा डीएनए होची डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ओके दैट एसिड इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 क्लियर आर स्ट्रक्चर होची P OH OH double bond O OH this is the structure of what phosphoric acid H3PO4 तीनटा H अछि 1 2 3 PO4 1 2 3 4 H3PO4 this is the hydroxyl ion OH ion this hydroxyl ion occurs as anion माने समस्त नेगेटिव चार्ज अछि so the net charge of phosphoric acid will be negative okay ताले due to negative charge of phosphoric acid the DNA will be also of negative charge तमे जो कॉलेज रे पढिबो तुमको इनिशियली तर सेल पढेबे फर्स्ट क्लास रे मु कहिछि सेल इज कॉमन टू बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी क्षेत्र पछरे तुमको काहे की प्रोकैरियोटिक सेल रे हिस्टोन प्रोटीन नाही डीएनए रे यूकैरियोटिक सेल रे काहे की हिस्टोन प्रोटीन अछि एटा कॉमन क्वेश्चन पचरंती आमे तक बर्तन डिस्कशन करि करिका जाउछे आमे देखुछे प्रथमे डीएनए रे स्ट्रक्चर इट्स नोन एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड व्हिच टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट ना दैट इज फॉस्फोरिक एसिड DNA रे phosphoric acid अछि this is the structure of a phosphoric acid in phosphoric acid this is known as OH minus ions तो तीनटा OH minus ions रहिछि सेति बेंगी phosphoric acid रो net charge रहिबा कोन नेगेटिव so due to negative charge of a phosphoric acid the DNA will be also negative charge तमको क्वेश्चन यदि पचरिबो DNA RNA न्यूक्लियस क्रोमोसोम राइबोसोम समस्तंकर चार्ज होउछि कोन दैट इज नोन एज व्हाट नेगेटिव चार्ज कारण सबुतरे कौन रही आइदर डीएनए रही और आरएनए रही इन केस ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ डीएनए इन केस ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ डीएनए इन केस ऑफ न्यूक्लियस ओके सेथरे सबुतरे कौन अछि फॉस्फोरिक एसिड रही फॉस्फोरिक एसिड थिबारु समस्त चार्ज होछि नेगेटिव ताने डीएनए इज नेगेटिव चार्ज जदि कोनोसी नेगेटिव चार्ज पाखरे गोटे पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड पळे आसीबो तले नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज भितर अट्रैक्शन हबो अट्रैक्शन हेले डीएनए चाहिबो से पॉजिटिव चार्ज चारिबे कोन होबा पेगी गुडे होबा पेगी अगेन आई एम रिपीटिंग आमे कहू डीएनए रो लेंथ बहुत बड़ जहा फल न्यूक्लियस भितर जगह ही परिबो नाही किंतु मु जो स्ट्रक्चर देखिली डीएनए रे जो डीएनए टा कोन हिची गुडे हिची कॉइल्ड हिची जते कॉइलिंग हेगा जीवो डीएनए तार लेंथ सेते कमी कमी जीवो तले को मेकानिज्म द्वारा डीएनए टा कॉइल्ड हिची ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ताले हिस्टोन प्रोटीन रहिले केमिति कॉइल्ड होची हम ते बुझिबा फर्स्ट हमें कहले डीएनए रो चार्ज होची नेगेटिव चार्ज काहे कि ना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डीएनए हो कि आरएनए हो कि क्रोमोसोम हो कि न्यूक्लियस हो कि राइबोसोम हो ऑल आर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड एक क्वेश्चन मते पचारे राइबोसोम न्यूक्लियस क्रोमोसोम डीएनए आरएनए ऑल आर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड काहे कि ना समस्तंकर पाखरे कोन अछि फॉस्फोरिक एसिड अछि क्लियर तले डीएनए इज ऑफ नेगेटिव चार्ज जदि नेगेटिव चार्ज डीएनए पाखको कोन छोटे पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड में नहीं आसीबा तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हबो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन हेले डीएनए चाहिबो से पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड चेर कोन होबा पेगी गुडी ही जवा पेगी तो के से पॉजिटिव चार्ज ना से पॉजिटिव चार्ज होची हिस्टोन प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप्स आइदर हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन रो बहुत प्रकार क्लासिफिकेशन अछि इट इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ओके जोथरे जो प्रोटीन रे कोन अछि प्लस चार्ज अछि तनो हिस्टोन प्रोटीन जोथरे प्लस चार्ज नाही सेटा होछि कोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन अगेन आई एम रिपीटिंग डीएनए सहित हिस्टोन प्रोटीन लागिले डीएनए कोन होछि गुडे होछि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ताल दिस इज डीएनए ऑफ व्हिच चार्ज दिस इज नेगेटिव चार्ज डीएनए नेगेटिव चार्ज सब रहिछि काहे कि ना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट फॉस्फोरिक एसिड क्लियर जदि डीएनए पाखु को हम हिस्टोन प्रोटीन नै आसीबा हिस्टोन प्रोटीन ताले व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन ना हिस्टोन प्रोटीन it is one type of protein in which positive charge is present positive charge clear tale what is protein na protein is a chain composed of many amino acids protein bhitre bahut amino acid roichi clear that amino acid may be okay positively charged or negatively charged or that is neutral तीन प्रकार amino acid अछि मु तुमको आगे amino acid structure draw करिवे प्लस एटा होचे सबुठारु मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड आल्सो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ व्हाट सेल सबुठारु इंटरेस्टिंग एटा क्लियर व्हाई इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल
हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट विथ होम डीएनए प्रथम आम जानिले मु देखे लिखि देछि डीएनए रो चार्ज होछि नेगेटिव काहे ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ओके ता पाखु को हम हिस्टोन प्रोटीन रखी हिस्टोन प्रोटीन अच्छी डीएनए सहित हिस्टोन प्रोटीन लागि रही यूक्रेटिक सेल कहीं अच्छे ना हिस्टोन प्रोटीन चार्ज होछि पॉजिटिव कहीं हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज आम तक बर्तमान डिस्कशन करिबा प्रोटीन इट इज कंप्लीट ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन बहुत प्रकार अच्छे आम वन बाय वन यार सब पर डिस्कशन करके जीवा खाली एतिक मन रख ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज अमीनो एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स some amino acids are positively charged they are known as a basic amino acid some amino acids बहुत मिसिला पर गोटे प्रोटीन तैयारी करिवे प्रोटीन से प्रोटीन ना होछु कोन हिस्टोन प्रोटीन इज वन टाइप ऑफ प्रोटीन ता माने आ भितर बहुत कोन थिबो अमीनो एसिड थिबो प्रोटीन इज ए चेन ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स तला आ भितर बहुत अमीनो एसिड थिबो नेक्स्ट कहले अमीनो एसिड केते प्रकार ना अमीनो एसिड 3 प्रकार रो ओके गोटे होची पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड तक हम कहू बेसिक अमीनो एसिड आउट होची नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड तक हम कहू एसिडिक अमीनो एसिड आउट होची न्यूट्रल चार्ज अमीनो एसिड सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज द अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स दैट इज बेसिक अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड कोटा को बेसिक कोटा के एसिड कोटा न्यूट्रल टिक आईडिया नबा आर चाहो पिले मु गोटे अमीनो एसिड रो स्ट्रक्चर ड्रा करिवि अमीनो एसिड आर दुटा ग्रुप अछि गोटे अमीनो ग्रुप अछि आ गोटे एसिडिक ग्रुप अछि ओके तले कोन अमीनो ग्रुप कोन एसिडिक ग्रुप हम देखैबा कार्बन मझिरे रहिछि एपट रहिछि गोटे अमीनो ग्रुप NH2 अमीनो ग्रुप ओके दिस साइड इज हैविंग COOH दिस इज कार्बोक्सिल की ग्रुप तो गोटे अमीनो ग्रुप अछि गोटे कार्बोक्सिल ग्रुप अछि ऊपर रही गोटे हाइड्रोजन तले रही गोटे आर ए आर टा होची इट इज नोन एज साइड चेन अगेन आई एम रिपीटिंग मु कहूची डीएनए सहित हिस्टोन प्रोटीन लागि रही यूक्रेटिक सेल ओके कहीं लागि रही ना हिस्टोन प्रोटीन चार्ज होची पॉजिटिव ओके कौन पे पॉजिटिव आम बर्तमान तो डिस्कशन करूचे हिस्टोन प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड आम कहले अमीनो एसिड 3 प्रकार गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव गोटे न्यूट्रल तो इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड केमिति पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड बर्तमान हम तो डिस्कशन करछे सुनो एटा जो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इट इज हैविंग एसिड ग्रुप COOH इट इज हैविंग अमीनो ग्रुप इट इज हैविंग सेंट्रल कार्बन एटम ओके upon the central carbon atom a hydrogen atom is present and below that carbon okay R group is present this R group is known as side chain आम बॉडी रे सारा वर्ल्ड रे जतिक लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती समस्तंकर सेल रे 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट 22 प्रकार रो किंतु हमें आज पर्यंत भी पढ़ी चली 20 प्रकार रो बिली पढुचे 20 प्रकार रो किंतु एक्चुअली 22 प्रकार अमीनो एसिड अछि ओके जो अमीनो एसिड जो 22 प्रकार अछि और 20 प्रकार अछि ताको समस्तंकर चारिटा ग्रुप समान अछि तार हमें कहबा पुराना हिसाब रे 20 टा अछि अमीनो एसिड किंतु एक्चुअली 22 अछि ओके जो 20 टा हम पढुचे 20 टा जो अमीनो एसिड अछि समस्तंकर कार्बन अछि एसिड ग्रुप अछि अमीनो ग्रुप अछि हाइड्रोजन अछि all are having 4 different groups okay but they differ from each other by a group that group is known as a side chain or that is known as a variable group मु तुम एग्जांपल दोची जदी ए आर बदल रे हम एच लिखि दबा एच ताहले नेम ऑफ दिस अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन इज an amino acid in which the R group is represented by what H जदि हमें एच बदल लिखि दबा CH3 ताले एटा हे जिवो अलानाइन ताले अमीनो एसिड रो सब जाक ग्रुप कांस्टेंट रही छी केवल आर ग्रुप टा चेंज हेगा जाउची जदि आर ग्रुप बदल रे हमें एच लिखि दोचे सेटा हे जाउची ग्लाइसिन इफ द आर ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय CH3 then that is known as alanine if R group is represented by CH2OH then this is known as सेराइन एमती बहुत प्रकार अमीनो एसिड अछि समस्त ना केवल चेंज हेगा जाउची जेतोले हमें ए आर टा को चेंज कर दोचे ओके ताहले दिस आर ग्रुप इज नोन एज ए वेरिएबल ग्रुप कारण एटा वेरी करूची आ समस्त होचंदी कांस्टेंट क्लियर
এটা হচ্ছে এসিড কার্বক্সিলিক এসিড এটা হচ্ছে NH2 মানে এটা হচ্ছে বেস তুমি কেমিস্ট্রি পিলে পড়িব acid is that substance okay which can donate a proton okay जे गोटे प्रोटॉन डोनेट करि पारथिबो प्रोटॉन माने H+ जे गोटे H+ डोनेट करि पारथिबो ताको हमें कहबा कोन दैट इज एसिड सो एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर base is that substance which can accept a proton so base is what proton acceptor again I am repeating okay chemistry पढिबा तमे एबे जानि परिबनी गोटे अछि केमिस्ट्री 11th रे आरंभ करिवो गोटे अछि ल्यूइस जन साइंटिस्ट ल्यूइस कोन करथले गोटे कांसेप्ट देथिले कहले जो केमिकल सब्सटेंस which can donate माने देई परिबो which can give a proton H+ माने ता भितरु से H+ को बाहर को अन्य जन को देई परिबो जी H+ देई परिबो सेटा होछि एसिड जी H+ को नेई परिबो सेटा होछि बेस so acid is a proton donor H+ माने प्रोटॉन acid is a proton donor whereas base is a proton acceptor ताले एठी कोन करछि COOH आना होछि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ताले कोन करि परबो ये गोटे H+ देई परिबो तो जे प्लस देई देला माने प्लस चार्ज ता भितर पळेइला से कोन हेगला माइनस हेगला ताले H+ देई देला एटा हेगला COO- क्लियर ताले से H+ ता जे देई छ नबो के ना एटा होछि बेस NH2 ताले H+ नहीं गला तो NH2 थिला हेगला कोन NH3+ ताले एटा हेगला माइनस एटा हेगला प्लस ताले गोटे अमीनो एसिड रे एटा होछि कोन आकु कोनती आनायन आकु कोनती कैटायन जोटा प्लस चार्ज ताकु कोनती कैटायन प्लस इज नोन एज व्हाट कैटायन and minus is known as what anion ताले गोटे अमीनो एसिड रे दुटा चार्ज हे गला गोटे होछि कैटायन गोटे होछि आनायन कैटायन काहा को कहबा ना जार चार्ज होछि कोन पॉजिटिव आनायन काहा कहबा जार चार्ज होछि नेगेटिव ताले एटा होछि गोटे एसिड एटा होछि गोटे बेस ए जो अमीनो एसिड रे दुटा रहिला प्लस गोटे रहिला दुटा रहिला चार्ज गोटे होछि प्लस गोटे होछि माइनस ताले प्लस गोटे माइनस गोटे ताले आर नेट चार्ज कोन हेजिबो 0 सो इट इज नोन एज व्हाट न्यूट्रल अमीनो एसिड ताले जो अमीनो एसिड रे गोटे प्लस रहउछि गोटे माइनस रहउछि से प्रकार अमीनो एसिड के हम कहउछि न्यूट्रल अमीनो एसिड ओके किंतु ए तळटा होछि आर माने साइड चेन ओके धरा जो एठी गोटे रहिछि स्ट्रक्चर CH2 and last one is NH2 okay आर साइड चेन रे चारिटा रहिछि CH2 लास्ट रहिछि NH2 okay then this amino acid is known as lysine ये अमीनो एसिड ना हे गेला को लाइसिन जेतेबेले साइड चेन रे आमे चारिटा मिथाइल ग्रुप लगेले गोटे अमीनो ग्रुप लगेले सेटा हे गेला को लाइसिन तो जेतु अमीनो ग्रुप अछि अमीनो ग्रुप मध्ये कोन करिवे गोटे प्रोटॉन नै परिबो जो मीडियम रे अमीनो एसिड रहिछि से मीडियम रु गोटे प्रोटॉन नै परिबो अमीनो ग्रुप तले एटा कोन हे परिबो NH3+ तले ये गोटे अमीनो एसिड जोटे दुटा रहिला कैटायन दुटा प्लस चार्ज गोटे रहिला आनायन गोटे माइनस चार्ज सो इट इज नोन एज डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड डाई अमीनो माने दुटा अमीनो ग्रुप रहिछि मते भलो कि बुझो मु कहूछि अमीनो एसिड तीन प्रकार रो किछि अमीनो एसिड होचंदी न्यूट्रल किछि होचंदी बेसिक किछि होचंदी एसिडिक माने जो अमीनो एसिड रो चार्ज होछि 0 माने जति प्लस अछि सेति माइनस अछि ताको हम कहूछि न्यूट्रल अमीनो एसिड जोटी अधिक रहिछि प्लस सेटा होछि बेसिक जोटी अधिक अछि माइनस सेटा होछि एसिडिक क्लियर ये हो जोटा अमीनो एसिड जहार साइड चेन रे रहिछि जोटे एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप रहिछि तल तार दुटा प्लस हे गेला गोटे माइनस हे गेला सो द नेट चार्ज इज प्लस इट इज नोन एज डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड ओके ये अमीनो एसिड ना होछि लाइसिन तल आर चार्ज ऑफ प्लस लाइसिन जेमती गोटे प्लस चार्ज अमीनो एसिड सेमती आउट अमीनो एसिड अछि तना होछि arginine lysine and arginine these two are plus charge amino acid so they are known as a basic amino acid कोडीटा भितरु दुटा होछि बेसिक अमीनो एसिड गोटे होछि लाइसिन आउट होछि arginine आउ दुटा होछि एसिडिक माने जार चार्ज होछि नेगेटिव जणा होछि aspartic acid ओके आउट होछि ग्लूटामिक एसिड So out of 20 amino acid दीटा होछि बेसिक दीटा होछि एसिडिक आउ 16 टा होछि कोन दैट इज न्यूट्रल माने 16 टा चार्ज होछि कोन 0 माने जति प्लस जति माइनस
ये जो दुटा रहा लाइसिन आर्जिनिन आर चार्ज होचे प्लस चार्ज जेहेतु प्लस चार्ज आको हम बेसिक अमीनो एसिड कहूचे ये बेसिक अमीनो एसिड मिसिकी कौन कला गोटे प्रोटीन तैयारी कला दैट प्रोटीन इज नॉट हिस्टोन प्रोटीन ताले हिस्टोन प्रोटीन चार्ज होचे पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली अमीनो एसिड लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन ये हिस्टोन प्रोटीन थिबारु ओके डीएनए हिस्टोन प्रोटीन चारिपटे कौन ये गुड़े होउची कारण डीएनए चार्ज होचे नेगेटिव हिस्टोन प्रोटीन चार्ज होचे पॉजिटिव ओके ये पॉजिटिव चार्ज चारिपटे जाक डीएनए गुड़े हो गला ताले डीएनए जिते गुड़े होउची जिते कॉइल होउची तार लेंथ कमी कमी जाउची ओके ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ डीएनए ओके इट इज very easier for that long sized डीएनए to be present inside what very small nucleus ସେଥିପାଇଁ କି ୟୁକାରିयोटिक सेल रे जेहेतु न्यूक्लियस साइज बहुत छोट अछि ता भीतर डीएनए आराम से जगह ही पारुछि काहे कि ना की थिबारु हिस्टोन प्रोटीन ओके प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही ସେଥିପାଇଁ सफिशिएंट जगह मिलुछि ସେଥିପାଇଁ कि डीएनए को कोन हवा दरकार नहीं अधिक गुडे तुडे हबार आवश्यकता नहीं ସେଥିପାଇଁ कि सेटा होछि कोन दैट इज व्हाट हियर हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट ओके ताले गोटे क्वेश्चन आसला वर्तमान ओके व्हाट इज अमीनो एसिड अमीनो एसिड होची गोटे केमिकल सब्सटेंस जो थरे गोटे अमीनो ग्रुप अछि गोटे एसिडिक ग्रुप अछि अमीनो एसिड दीटा वर्ड अछि गोटे अमीनो आ गोटे एसिड जो केमिकल सब्सटेंस रे दीटा को ग्रुप थिबो अमीनो ग्रुप थिबो एसिडिक ग्रुप थिबो ताको हम कहबा अमीनो एसिड ता स्ट्रक्चर केमती ना गोटे कार्बन रहिछि मझिरे रहिछि कोन ऊपर रहिछि H एपर रहिछि NH2 एटा होछि अमीनो ग्रुप NH2 को कहते अमीनो एटा होछि COOH तळ रहिछि R हम सेल रे 20 प्रकार अमीनो एसिड रहिछि एटा होछि अमीनो एसिड स्ट्रक्चर अमीनो एसिड दिटा वर्ड जो सब्सटेंस रे अमीनो थिबो प्लस एसिड थिबो त कहन कहबा अमीनो एसिड कहबा दिस द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड हम बॉडी रे एमति 20 प्रकार अमीनो एसिड अछि सेमान को तीन भाग रे विभक्त कराइछि ओके जो अमीनो एसिड चार्ज होछि 0 ताको हम कहउछि न्यूट्रल अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड चार्ज होछि प्लस ताको हम कहउछि बेसिक अमीनो एसिड जो अमीनो एसिड चार्ज होछि माइनस ताको हम कहउछि कोन एसिडिक अमीनो एसिड क्लियर ताले एटा को कोन ना एठी एटा होछि NH2COH आर चार्ज होछि माइनस कारण एसिड माने गोटे प्लस देई परियो जदि प्लस देई देला माइनस हे गेला ताले एटा होछि कोन गोटे कोन ना एटा होछि गोटे माइनस चार्ज NH2 ये जो H प्लस दे देला ये प्रोटॉन टा दे देला COOH अछि ये H प्लस दे देला एटा माइनस हे गेला एटा को माइनस देला हे गेला जो H प्लस दे देला ताको H प्लस ये नै गेला तो NH3 प्लस त गोटे प्लस गोटे माइनस एटा गेला न्यूट्रल जहार ए साइड चेन गोटे एक्स्ट्रा प्लस रहि गेला सेटा गेला बेसिक जहार साइड चेन गोटे एक्स्ट्रा माइनस रहि गेला सेटा होछि एसिडिक तले एटा होछि अमीनो एसिड ओके अमीनो ग्रुप अछि एसिडिक ग्रुप अछि अमीनो रो चार्ज होछि कोन प्लस एसिडिक रो चार्ज होछि कोन माइनस ओके जदि दिटा समान रहला न्यूट्रल जदि अधिक प्लस रहला बेसिक जदि अधिक माइनस रहला सेटा होछि एसिडिक डीएनए रो चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव अछि ओके सेति बें कि हम चाहूचे डीएनए रो सेल चाहूचे डीएनए रो लेंथ कमु बेली केमिति कमिबा ना जदि डीएनए गुडे हबो डीएनए गुडे हबो पें कार आवश्यकता रहला हिस्टोन प्रोटीन कारण हिस्टोन रो चार्ज होछि पॉजिटिव ओके काहे कि ना ता भीतर दीटा पॉजिटिव चार्ज रो अमीनो एसिड अछि सेति बें कि ता चारि बार जाको डीएनए कोन होछि गुडे होछि जते गुडे होछि तार लेंथ कम होछि ताले आमे कहले यूकैरियोटिक सेल रे डीएनए सहित हिस्टोन प्रोटीन अछि हिस्टोन प्रोटीन रहितबरु डीएनए गुडे होछि प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन नाही काहे कि ना प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही जेतु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही सेति बें कि ओके सफिशिएंट जगह मिलुछि के रहया बें कि डीएनए किंतु एठी जेतु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थिला ता भीतर साइज डीएनए रो न्यूक्लियस रो डायमीटर कोन होतला कमी जाउतला कम भीतर एते बड़ डीएनए रहया बें कि हिस्टोन प्रोटीन आवश्यकता थिला किंतु एठी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही विराट के जगह मिलुछि सेति बें कि डीएनए को ए छोट जगह भीतर रहिबार आवश्यकता नाही जोउठी रहिले भी चलिबो सेति बें हिस्टोन प्रोटीन रो आवश्यकता नाही इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ओके ताले प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन नाही यूकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन अछि एति की बुझिया भीतर कार कोन डाउट होछि पचार ए जो पढेली प्रोकैरियोटिक सेल रे हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट यूकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट आर भीतर कोन डाउट होछि पचार
बर्तमान पर्यंत जो डिस्कशन कली तीन प्रकार जो सेल अच्छी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल मेसोकैरियोटिक सेल आम पर डिस्कशन करवा बर्तमान मुझे डिस्कशन करुच्ची प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल भीतर डिफरेंस कौन ओके तुमर कहार कौन डाउट अच्छे या भीतर पचार मुझे कहली प्रोकैरियोटिक सेल टा ओल्ड सेल primitive cell because in prokaryotic cell nucleus is not surrounded by nuclear membrane. In eukaryotic cell nucleus is surrounded by nuclear membrane, therefore eukaryotic cell is advanced cell, modern cell, well developed cell. Okay, whereas a prokaryotic cell is the old cell, it is a primitive cell, it is not well developed. Okay, next coil in case of prokaryotic cell histone protein is absent in DNA. In case of eukaryotic cell histone protein is present in DNA. कहीं यूकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन अच्छे आम कौन कले इन डिटेल डिस्कशन कले तुम खाली बही लिखि दउची प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन नाही यूकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन अछि तुम मेकानिज्म जानि गले कहीं हिस्टोन प्रोटीन अछि ना कारण यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस रो जो डायमीटर बहुत छोट छोट न्यूक्लियस ता भीतर बहुत बड़ डीएनए रहिबा पई कि एमिति कोनोसी गोटे मेकानिज्म दरकार जहाँ फल डीएनए जगह हो पार केमी ना जब हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन चार्ज होची पॉजिटिव डीएनए टा नेगेटिव तांग भीतर कौन है अट्राक्शन है धीरे धीरे डीएनए लेंथ कौन है कमी गला आराम से जगह हो पारा यूकैरियोटिक सेल क्लियर सो दिस द डिफरेंस तीन टा डिफरेंस कहले एतिक भीतर कहार कौन डाउट अछि कह इज देयर एनी डाउट बर्तमान पर्यंत गलानी किसी डाउट अछि भीतर okay so then let us come to discuss about other differences आउ कौन सब differences अच्छे आउ दुईट तीन डिफरेंस में कौन डिस्कशन करी तापरे प्रीवियस क्लास गुड़ा आम सब जहाँ पढ़ी ताको आम इन डिटेल देखा केमी सब पिक्चराइज कर देखा केमी सब फिगर रही ओके जहाँ फल तुम आउरी इंटरेस्ट बढ़ो तुम क्लियरली बुझी पार क्लियर प्रोकैरियोटिक सेल रे जोड़ाक न्यूक्लियस that is also chromosome, that is also DNA. Nucleus, chromosome and DNA, these are three different names, but structure is one. In case of eukaryotic cell, nucleus is different, inside which chromosome is present, that is different, inside which DNA is present, that is different. So three different structures are present in case of eukaryotic cell, but they are same in case of what? Prokaryotic cell. Clear? That DNA or nucleus or chromosome in case of a prokaryotic cell जोटा nucleus सेटा DNA सेटा chromosome that is looking like this आरो दुटा strand रही strand and that is circular prokaryotic cell जो DNA रही सेटा जो गोलेईटा circular DNA टा it is circular किंतु eukaryotic cell पिले जो DNA रही that is it is double stranded linear. Again I am repeating. In case of prokaryotic cell, the shape of the DNA is circular. In case of eukaryotic cell, the shape of the DNA is what? Linear, means straight. Kintu gude is coiled. They are coiled but linear. But in case of eukaryotic cell, it is what? Circular. Prokaryotic cell how? Ki eukaryotic cell how? Dita bhitar dita strand thai. Ye gote strand, ye gote strand. Ye gote strand, ye gote strand. So DNA is always double stranded. In case of both prokaryotic cell and in case of both eukaryotic cell. But the difference is that in case of a prokaryotic cell, DNA is circular. In case of eukaryotic cell, it is what? Linear. Eukaryotic cell pile dita organelle रही तमे जानि छ गोटे माइटोकॉन्ड्रिया आ गोटे प्लास्टिड प्लास्टिड माने क्लोरोप्लास्ट ओके प्लास्टिड तीन प्रकार अछि गोटे क्लोरोप्लास्ट गोटे क्रोमोप्लास्ट गोटे लिकोप्लास्ट जे फोटोसिंथेसिस करूछि सेटा जो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल रे गोटे ऑर्गेनेल अछि ता नाउ क्लोरोप्लास्ट प्लांट और एनिमल सेल दि जन के भीतर गोटे ऑर्गेनेल अछि ता नाउ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल ओके ताले इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल रे दुटा ऑर्गेनेल अछि गोटे होछि माइटोकॉन्ड्रिया और होछि क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड the DNA is also present but the DNA is circular like prokaryotic cell in prokaryotic cell DNA is circular गोले ही रही in case eukaryotic cell DNA is linear किंतु eukaryotic cell भीतर दुटा ऑर्गेनेल अछंती गोटे होछि माइटोकॉन्ड्रिया one is mitochondria another is what plastid गोटे क्लोरोप्लास्ट होछि गोटे टाइप ऑफ प्लास्टिड तले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड these two organelles are found in case eukaryotic cell they have DNA
but the DNA is circular like prokaryotic cell. ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, name two organelles which are present inside what? Eukaryotic cell but shows the character of a prokaryotic cell. ଆମେ simply କହିଲେ eukaryotic cell जो DNA ଟା that is linear or straight but coiled. Prokaryotic cell जो DNA ଟା that is circular, but in eukaryotic cell two organelles are present, one is mitochondria, another is what? Plastid or chloroplast, ଯୋଉଥିରେ DNA ଟା ହଉଛି କଣ? that is circular. ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା in case of eukaryotic cell both linear DNA and circular DNA are present, but in case of eukaryotic cell both linear DNA and circular DNA is present, but in case of prokaryotic cell only linear DNA is present. Okay, তাহলে in case of prokaryotic cell only what? Circular DNA is present, but in case of eukaryotic cell both linear and what? Circular DNA is present. That circular DNA is present inside two organelles, that is mitochondria and what? Plastid. তাহলে which DNA is common to both prokaryotic cell and eukaryotic cell? That is circular DNA. Okay, which organelles are present inside eukaryotic cell but shows a prokaryotic character? That is mitochondria and plastid. eukaryotic cell रे शह organelle अछंती, केवल दुईटा organelle रो DNA अछि. आमे जानिछे जनरली DNA टा का भितर थिबा कथा? न्यूक्लियस भितर. eukaryotic cell रे न्यूक्लियस, ता भितर क्रोमोसोम भितर DNA. So DNA रो पोजीशन होछि न्यूक्लियस. It should be present inside a nucleus. In case of eukaryotic cell, nucleus को छाड़ी किरी besides nucleus the DNA is also found in two different organelles. One is mitochondria, another is what? Plastid. Okay, but in case of prokaryotic cell only one DNA is present. That DNA is known as what? That is known as a nucleoid or genophore. Already हम लिखे थे nucleoid or genophore. That nucleoid or genophore is circular. So circular type of DNA is found in case of prokaryotic cell. Both linear and circular DNA is found in case of what? Eukaryotic cell. Clear? एतिक पर्यंत हम जो पढ़िले ता पूर्व हम ऑलरेडी पढ़ितले व्हाट इज सेल पढ़ितले, सेल थ्योरी पढ़ितले. ओके, वर्तमान पढ़िले डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. हमें बहुत डिफरेंस डिस्कशन करि करि जिबा, कारण एई कांसेप्ट टा क्लियर हला परे जाय कि तुमको अलगा पाठ बॉटनी जूलॉजी सब जगह धरिया पे सुविधा हो, कारण दिस द मोस्ट conceptual chapter of entire biology, that is cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. हमें one by one सब स्टेप को हम डिस्कशन करके जिबा. ता पूर्वरु सेल थ्योरी वर्तमान पर्यंत जहां पढ़िले तार जो देखिबा कोन सब एनिमेटेड पिक्चर सब अछि, तार सब कोन सब फिगर अछि जापर हमें क्लियरली गोटे आईडिया आसी जो हां एटा होची सेल, आ भितर ए सब जिंस अछि, एटा होची प्रोकैरियोटिक सेल, एटा होची यूकैरियोटिक सेल. क्लियर? हम वर्तमान सेटा सब धीरे धीरे सब देख जिबा. ओके, ओके. ताले वर्तमान हम जो पढ़ितले सब आगुरु फर्स्ट सेल पढ़ितले. स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. ओके, सेल केमिति देखाउछ देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंडर रे हाउ द सेल इज लुकिंग लाइक. ओके, रॉबर्ट हुक फर्स्ट सेल डिस्कवर करथिले. ओके, स्क्लिडेन स्वान सेल थ्योरी देथिले. ओके, हमने ऑलरेडी पढ़िछे सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, प्लांट हो कि एनिमल हो समस्तंकर सबटु छोट होची सेल. ओके, सेटा सु देखि देखा जाओ सुंदर रे देइछे. सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट.
प्लांट एनिमल जतिक लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे समस्त स्ट्रक्चर पॉसिबल होती केवल सेल जो सेल हूँ सब स्मॉलेस्ट यूनिट सी अच्छे बोली आम अच्छे ओके ये सब साइंटिस्ट कौन करते सेल विषय सब कम करते रॉबर्ट को फास्ट सेल को डिस्कवरी करते आंटन भन लियोनार्ड ऑलरेडी आम आगुरी लिखीचे से लिविंग सेल को कौन करते डिस्कवरी करते दी जन साइंटिस्ट स्क्लिडेन आउ स्वान ऑलरेडी आगुरी पढ़ाई जाइए स्क्लिडेन आउ स्वान सेल थ्योरी जाइए किंतु से माने एक्सप्लेन करि पारलेनी हाउ द न्यू सेल इज प्रोड्यूस्ड ताको एक्सप्लेन कले रुडोल्फ विर्चो से बिंदु आमे कहले मॉडर्न सेल थ्योरी ओके सेल केमति धीरे धीरे तार ग्रोथ होउची तार नंबर भी बढ़ुची इट इज ड्यू टू डिवीजन गोटे सेल थिला डिवाइड कर दुटा सेल हैला सेल नंबर बढ़ि बढ़ि जाउची चारटा सेल आठटा सेल सेल नंबर बढ़ुची प्लस सेल कोन होची साइज बढ़ुची सेल को आमे कहले इट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इट इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ओके सेल भीतर जहां सब एंटर जिनस अच्छे सब जगह कहते प्रोटोप्लाज्म ओके ये प्रोटोप्लाज्म को पर्किंस जने साइंटिस्ट से नाम देते प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कही प्लांट सेल हो कि एनिमल सेल हो सेल भीतर जहां सब अच्छे सब जगह हूँ प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म अच्छी बेली ता भीतर सब डिफरेंट जिनस अच्छा डिफरेंट ऑर्गेनेल अच्छी बेली सब डिफरेंट फंक्शन करुँच आमर फंक्शन पॉसिबल होती देख सुंदर वे से केम देखा सेल वाला सब ओके आम आइडिया ना बर्तमान कौन ना दैट इज व्हाट केमती हाउ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज लुकिंग लाइक प्लांट सेल एनिमल सेल भीतर डिफरेंस केमती अच्छे हम देखिए बर्तमान कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल मे बी प्लांट सेल और मे बी एनिमल सेल सबुठारु और मे बी प्लांट और मे बी एनिमल सबुठारु स्मॉलेस्ट होची सेल हाउ द प्लांट एंड एनिमल सेल इज लुकिंग लाइक ओके आम देखिले केमती जानि परबे एटा होची प्लांट सेल देखिले केमती जानि परबे एटा होची एनिमल सेल जो सेलटा रेक्टांगुलर हेकी थिबो दैट इज प्लांट सेल जोटा सर्कुलर हेकी थिबो दैट इज व्हाट एनिमल सेल ओके जार सेल वॉल थिबो दैट इज व्हाट प्लांट सेल जार सेल वॉल नथिबो दैट इज व्हाट एनिमल सेल एमति किछि डिफरेंस अछि हम देखि के जानि परबे एटा होची प्लांट सेल एटा होची कोन एनिमल सेल देखो गोटे प्लांट सेल देछि गोटे प्लांट चित्र देछि गोटे एनिमल चित्र देछि ओके बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट सेल्स बट द प्लांट सेल द सेल प्रेजेंट इन प्लांट इज लुकिंग लाइक व्हाट रेक्टेंगुलर बट द सेल प्रेजेंट इन एनिमल इज लुकिंग लाइक व्हाट राउंडेड ओके राउंड सेल is present in case of round or circular is present in case of animal cell but rectangular is present in case of plant cell फिर क्वेश्चन पचाछि the animal cell रो shape टा vary करूछि it is round circular spherical polygonal different shape दे देका जाउछि ओके elongated ओके किंतु इन केस ऑफ प्लांट सेल केवल गोटे प्रकार सेल रहिछि गोटे प्रकार शेप रहिछि व्हाई ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल टा होछि नॉन इलास्टिक किंतु सेल मेम्ब्रेन टा होछि इलास्टिक होतबरु शेप टा तर चेंज हेका जाउछि प्लांट सेल जेहेतु सेल वॉल टा होछि नॉन इलास्टिक सेदिन से कोन होछि गोटे प्रकार शेप रखुछि क्वेश्चन होछि व्हाई द प्लांट सेल इज हैविंग ओनली वन शेप एनिमल सेल इज हैविंग डिफरेंट शेप्स एटा राउंड हेई परिबो ओके स्फेरिकल हेई परिबो सर्कुलर हेई परिबो एलोंगेटेड हेई परिबो एलिप्सोइडल हेई परिबो ओके इट इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल मेम्ब्रेन थिबारु से सेल मेम्ब्रेन टा इलास्टिक होतबारु डिफरेंट शेप चेंज करूछि किंतु प्लांट सेल केवल सेल वॉल रहिछि आउटर मोस्ट कवरिंग टा जोटा नॉन इलास्टिक ओके जहां फल तार शेप चेंज होनी ओके ऑलरेडी हम देखैले केमति प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट सेल्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट सेल्स ओके नेक्स्ट देखो देखैछि दिस इज फर्स्ट वन इज व्हाट प्लांट सेल सेकंड वन इज एनिमल सेल प्लांट सेल रो देइछि साइटोप्लाज्म होछ आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल साइटोप्लाज्म नाही प्लांट सेल गोटे बड़ स्ट्रक्चर मझे देइछि दैट लार्ज स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट वैक्यूल एनिमल सेल जनरली वैक्यूल इज एब्सेंट ओके कि जदि वैक्यूल अछि तले बहुत छोट छोट वैक्यूल अछि एनिमल सेल रे प्लांट सेल रे रहि जोटा प्लास्टिड रहि जोटा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जोटा को एनिमल सेल रे नाही तले प्लांट सेल एनिमल सेल डिफरेंस कोन ना प्लांट सेल रहिला सेल वॉल जोटा एनिमल सेल नाही इन केस ऑफ प्लांट सेल प्लास्टिड इज प्रेजेंट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन एनिमल सेल प्लास्टिड इज एब्सेंट इन प्लांट सेल व्हाट इज एक्स्ट्रा प्रेजेंट ना ए लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल द वैक्यूल इज absent but in animal cell extra structure is present that is absent in plant cell which what is that that is centriole okay this is a plant cell this one is a animal cell
इन प्लांट सेल कौन कौन सब अच्छी जो एनिमल सेल नहीं ना प्लांट सेल सेल वॉल रही आउटर मोस्ट कवरिंग जो एनिमल सेल नहीं नेगेटिव माने नहीं माइनस ओके इन केस ऑफ प्लांट सेल रही कौन दैट इज प्लास्टिड तीन प्रकार प्लास्टिड अच्छी ता भीतर गोटे प्रकार प्लास्टिड होची क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट plants are doing photosynthesis but that chloroplast is absent in case of what animal cell nahi in case of plant cell a large centrally located vacuole is present vacuole animal cell रे centrally located vacuole nahi जदि animal cell किछि vacuole अछि तर size होछि छोट छोट animal cell कोन अछि जोरा plant cell nahi ना animal cell गोटे extra structure अछि जोरा plant cell nahi ता होछि centriole ये होछि organelle that is responsible for what cell division animal cell जो division होछि okay it is possible due to presence of what centriole that centriole is absent in case of what plant cell ताले हमें generally कहिले plant cell and animal cell these are two different types of what eukaryotic cell कारण ए दुईटा को सेल रे कोन अछि ओके ए दुईटा को सेल रे न्यूक्लियस चारि पर जाक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि सो टू एग्जांपल्स ऑफ eukaryotic cell और plant cell and animal cell ता भीतर हम डिफरेंस देले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ना प्लांट सेल एई सब कैरेक्टर अछि जोडा कोन नाही एनिमल सेल नाही ओके और बहुत जिंस अछि हम वन बाय वन एरा सब कोन करिबा डिस्कशन करि करि जिबा आगो टिका हम आईडिया नै गले मेल तीन प्रकार सेल अछि किंतु मेल हम दिरे डिस्कशन गले उडो जो प्रोकैरियोटिक सेल और जो यूकैरियोटिक सेल दिस सेल इन व्हिच nucleus is not having nuclear membrane that is prokaryotic cell and we gave examples of prokaryotic cell that is what bacteria blue green algae these are examples of prokaryotic cell then hame कहले कोन the cell in which nucleus is surrounded by nuclear membrane that is known as eukaryotic cell and we gave examples of eukaryotic cells like plant cell and animal cell then we discussed what is the difference between plant cell and animal cell in plant cell these are present which are absent in animal cell this is present which is absent in what case of what plant cell so this is the difference between plant cell and animal cell clear next time आउ गोटे सब देखिबा how the prokaryotic cell looking like prokaryotic cell कहला माने हम देखु जे कहा विषय कहू दैट इज बैक्टीरिया स्ट्रक्चर केमिति इन डिटेल हमें पढिबा सेटा सब पर पढिबा किंतु एबे गोटे एलिमेंटरी आईडिया नै जिबा ओके बैक्टीरिया केमि देखाउ हम प्लांट सेल केमि देखाउ देखिले एनिमल सेल केमि देखाउ देखिले हम जे देखिबा सेल इज स्फेरिकल देन दिस इज व्हाट और राउंडेड दिस इज व्हाट एनिमल सेल और इट इज रेक्टेंगुलर दिस इज plant cell okay so plant cell animal cell there are two different types of what eukaryotic cell next हम देखिबा structure of prokaryotic means bacteria already देखि दिजे ताको आउथ जस्ट खाली ताको आउथ रिव्यू करैबा okay bacteria cell और prokaryotic cell केमि देखाउछ clear how the prokaryotic cell is looking like structure of a prokaryotic cell okay देखो this is very what very interesting structure of what bacteria is looking like this okay this is the electron microscopic view of a bacteria because bacteria cannot be seen by our naked eye हमें खाली आंखरे बैक्टीरिया स्ट्रक्चर देखि परिबानी एटा को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर रे देखाई छि इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप रे देखाला परे बैक्टीरिया मैग्निफाई हि त बडो स्ट्रक्चर हि बडो स्ट्रक्चर दिस द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल त चारिपर जो बाहर जो सूता भलिया स्ट्रक्चर उडाको से स्ट्रक्चर गुड़ा सेटा सब होउछि त हम कहउछे फिलामेंट और दैट इज नोन एज सिलिया एंड फ्लाजेला ओके बैक्टीरिया चारि पर देखो दी प्रकार स्ट्रक्चर देखा जाय गोटे वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखा जाय ता होउछि सिलिया जोटा बड़ बड़ देखा जाय सेटा होउछि फ्लाजेला जो फ्लाजेला रे गोटे मेन पार्ट होउछि ता होउछि फिलामेंट अगेन आई एम रिपीटिंग दैट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहिछि जदि छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर अछि त हम कहउछि सिलिया दी बड़ बड़ रहिछि त हम कहउछि फ्लाजेला तीनटा पार्ट अछि मेन पार्ट होउछि फिलामेंट जो फिलामेंट थिबारु ओके फ्लाजेला कोन करूछि एमते हल्लुछि मूव करूछि मूव कला फल रे बैक्टीरिया गोटे जगह आउट जगह को जाउछि सो द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज पॉसिबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रक्चर दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट फ्लाजेला जो बड़ स्ट्रक्चर देखैछि ओके दैट लास्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लाजेला ओके हम जेंति गोड़ अछि हम गोटे जगह आउट जगह जाउछि सेमति सेटा होछि बैक्टीरिया होछि गोड़ सेटा अछि बेली बैक्टीरिया गोटे जगह आउट जगह को जाउछि क्लियर एटा दिस द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया भितर मझिरे देखो मझिरे जहा रहला टोटल होछि साइटोप्लाज्म ओके बैक्टीरिया मझिरे जहा रहछि टोटल होछि साइटोप्लाज्म भितरे गोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अछि दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज डीएनए
ओके एटा देखो डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आइदर कौन हो एमती हो पार स्पेरिकल ओके स्पेरिकल हो पार ताको हम कहबा कोकस कोकस कहबा बैक्टीरिया आइदर एमती रड भले देखा जिवो ताको हम कहबा बासिलस बैसिलस दिस इज कोकस different bacteria shape अच्छे when the bacteria is spherical it is coccus when it is rod shaped it is bacillus when it is spiral shaped it is known as spirillum when it is comma shaped it is known as a vibrium তাহলে ব্যাকটেরিয়ার চারিটা বেসিক শেপ রয়েছে ওকে বহুত প্রকার ব্যাকটেরিয়া আছে কিন্তু মেন বেসিক শেপ সে চারিটা যদি ব্যাকটেরিয়াটা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ অন্ডরে মু কহিলি ব্যাকটেরিয়াକୁ আমি সিম্পলি মাইক্রোস্কোপ আর ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ অন্ডরে দেখি পারিবা নাই কারণ তা সাইজ এতে ছোট যে কেবল ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখি পারিবা সেদিবেন কি ব্যাকটেরিয়াକୁ কুয়া যাଉଛି মাইক্রোস্কোপিক অর্গানিজম আমি এসব হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক অর্গানিজম আমার সাইজ বহুত বড় কিন্তু ব্যাকটেরিয়া এমান সাইজ এতে ছোট যে কেবল আমি ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখুছে তাকে আমি কହୁছে মাইক্রোস্কোপিক অর্গানিজম ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখলা পরে ওকে we know that the bacteria have four different basic shapes চারি প্রকার when it is spherical then it is known as coccus when it is rod shaped it is known as bacillus when it is S or spiral shaped it is known as spirillum when it is what comma shaped it is known as vibrium तो चारिटा डिफरेंट शेप्स रही प्रोकैरियोटिक रो और बैक्टीरिया रो आ भितर ए जो बैसिलस बैक्टीरिया गुडाक जार रड अच्छे तांको भितर सब पिले तैयारी होची स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज स्पोर्स सो स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर व्हाट बैसिलस ए चारिटा शेप भितर ए बैक्टीरिया गुडाक मेनली अधिक रही कोन फ्लैजेला सो दीज आर फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल दी प्रकार बैक्टीरिया अच्छे जो बैक्टीरिया मूव करें मूवमेंट शो करें गोटे जगह आउट जगह को जापरे देन नोन एज मोटाइल बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को मूवमेंट शो करें ना देन नोन एज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया दी प्रकार बैक्टीरिया ओके सिंपली आम भी सैया आम गोटे जगह आउट जगह जापे सो वी आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट सो वी आर मोटाइल जब हम गोटे जगह आउट जगह जापार ना नॉन मोटाइल से बैक्टीरिया को दुबार विभक्त कर गोटे मोटाइल बैक्टीरिया और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया ओके मोटाइल मैंने जहां पाखे फ्लैजेला अच्छी फ्लैजेला थले से आगे कौन कर मूवमेंट कर फ्लैजेला होची तार गोड़ तले जनरली स्पाइरलम बैक्टीरिया माने जार शेप होची एस शेप और स्पेरिकल शेप ओके और सॉरी दैट इज एस शेप और स्पाइरल शेप दैट स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर जनरली हैविंग व्हाट फ्लैजेला देयरफॉर दे आर कैपेबल ऑफ व्हाट मूवमेंट क्लियर विब्रियम आर शेप होची कॉमा शेप तले एमती चारि प्रकार शेप ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट क्लियर तले वी डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ सेल्स that is the prokaryotic cell and eukaryotic cell mesokaryotic cell हम पछरे डिस्कशन करिबा ओके and we discussed different characters of prokaryotic cell and different characters of eukaryotic cell okay I gave you example of a prokaryotic cell that is bacteria simply सुनो simply जो गुडा को unicellular organism those are unicellular organism and don't have a nuclear membrane they are known as what prokaryotic जो गुडा को unicellular organism or multicellular organism they have a nuclear membrane they are known as eukaryotic although three types of cells are present okay there is a prokaryotic eukaryotic and a mesokaryotic but in detail we will discuss about the prokaryotic and the eukaryotic aku sarala pore we will discuss about mesokaryotic we will discuss about mesokaryotic clear prokaryotic example hochi bacteria blue green algae eukaryotic cell example hochi plant cell animal cell I showed you the structure of a bacteria or a prokaryotic cell. I showed you the structure of a plant cell and what? Animal cell. Okay. Let us again discuss about okay other characters that is present between prokaryotic cell and what eukaryotic cell. What are other differences? Prokaryotic cell eukaryotic cell भितर आउ difference भी कोन अछि देखिबा. Clear? This is prokaryotic cell. This is what? Eukaryotic cell. In prokaryotic cell, this is the important one. In prokaryotic cell, membrane bound cell organelles are absent. In prokaryotic cell, membrane bound cell organelles are absent. In case of eukaryotic cell, both membrane bound and membrane less organelles are present.
Again I am repeating. In the cytoplasm of the cell, the inner substance of the cell is called a cytoplasm. Cell bhitre cell membrane tale jaha sabu rahichi eta hochi gote kono, this is a prokaryotic cell. Eta hochi flagella. This is cytoplasm. So the substance that is present below the cell membrane is called a cytoplasm. It is eukaryotic cell, means it is a plant cell. And this is cytoplasm. Inside the cytoplasm of both prokaryotic cell and inside the cytoplasm of both eukaryotic cell, okay, different organelles are present. Inside the cytoplasm of a prokaryotic cell, those organelles are present who are devoid of or who are lacking what? Membrane. Again I am repeating. Cytoplasm of a prokaryotic cell, this is the cytoplasm of a eukaryotic cell. Okay. Inside the cytoplasm of a eukaryotic cell, many organelles are present. Organelle कौन किसी example दियो ना. Some organelles are mitochondria. Now सुनचो mitochondria, that is known as a powerhouse of the cell. Plastid, that is known as what? Kitchen of the cell. Okay. Endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. Okay. एमती बहुत प्रकार organelle अछंती. आ भितरे 100 organelle अछंती cytoplasm भितरे. से organelle को दी भागे विभक्त कराइछि. किछि organelle चारिपटे जाको. Around some organelles, membrane is present. They are known as a membrane bound. Around some organelles, okay, membrane is absent. That is known as a membrane less. Again I am repeating. Inside the cytoplasm of a eukaryotic cell, different types of organelles are present. Organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, peroxisome, sperosome, glyoxysome. So many different types of organelles are present inside what? Cytoplasm. Okay. Those organelles present inside the cytoplasm are of two types on the basis of presence of a covering around them. Around some organelles, okay, coverings are present or membranes are present. They are known as membrane bound organelles. Mitochondria, around mitochondria two coverings are present. Around chloroplast or plastid, two coverings are present. Clear? Around lysosome only one covering is present. Around peroxisome only one covering is present. Okay. Around ribosome no covering is present. Okay. So two types of organelles are present inside the cytoplasm. Around some organelles coverings are present. They are known as the membrane bound organelles. Around some organelles coverings are absent. They are known as the membrane less organelle. Clear? So both membrane bound and membrane less organelles are present inside the cytoplasm of a eukaryotic cell. Clear? But in case of a prokaryotic cell, only membrane less organelle is present. Membrane bound organelle is absent. Clear? Then which one is the membrane less organelle? And that is ribosome. आमे कहिले eukaryotic cell both membrane bound और membrane less organelle अछि. Membrane bound किए ना mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, chloroplast, एटा सब होती membrane bound. Okay, membrane less organelle किए ना, that is ribosome. In case of eukaryotic cell, both membrane bound and membrane less organelles are present. In case of prokaryotic cell, membrane bound organelles are absent. मतलब जहार membrane अच्छी, जो organelle चारिपटे से covering अच्छी, organelles with coverings are absent in case of what? Prokaryotic cell. Only organelle without covering is present. Who is that? But that is ribosome. Ribosome is an organelle that is without covering. Okay, so ribosome is present both in prokaryotic cell. Okay, ribosome is present also in case of what? Eukaryotic cell. So ribosome is present both in prokaryotic cell and eukaryotic cell. Let a question pacharibo, which organelle is common to both prokaryotic cell and eukaryotic cell? That is what? Ribosome. Okay, how many coverings are present around ribosome? No covering, zero covering. आमे कहले organelle को दी भाग कराइछि, गोटे membrane bound और गोटे membrane less. ए ribosome होछि membrane less. It is common to both prokaryotic cell and what? Eukaryotic cell. एटी पिले क्वेश्चन आसीबो, this is very important one. Mitochondria होछि गोटे membrane bound organelle. That mitochondria known as the powerhouse of the cell. Mitochondria को हमें powerhouse of the cell कहउछे, कारण से कोन तयार करछि? एटीपी तयार करछि. In case of prokaryotic cell, mitochondria are absent. ताले mitochondria रा काम किए करूछि? कारण prokaryotic cell माने बैक्टीरिया. बैक्टीरिया तो सब काम करूछि.
bacteria are going from one place to another place. That is known as movement or locomotion. Bacteria are producing their own foods. Bacteria are digesting their food. Bacteria are reproducing, means they are increasing their number. তাহলে ব্যাকটেরিয়া ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ. ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାଉଛି. ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଖାଉଛି. ଓକେ, ଆମର ରେସ୍ପିରେସନ ହଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରେସ୍ପିରେସନ ହଉଛି. ଓକେ, ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛେ, ଆମର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କରୁଛେ. ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ କାମ କରୁଛେ ଆମ ଭଳିଆ. ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କାମ କରୁଛେ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିଯାଉଛି. କିଏ ସେ ଏନର୍ଜି ଦଉଛି? ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ. କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ ଇନ କେସ୍ ଅଫ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ନାହିଁ. ତାହେଲେ କିଏ ସେ ଅଛି ଯେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କାମ କରୁଛି? ନା ଇନ କେସ୍ ଅଫ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମେଜୋଜୋମ୍. ମେଜୋଜୋମ୍ ଯିଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି. ସୋ ଇନ କେସ୍ ଅଫ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପାୱାର ହାଉସ ଅଫ ଦି ସେଲ୍? ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମେଜୋଜୋମ୍. Again I am repeating. In case of eukaryotic cell, inside the cytoplasm, two different types of organelles are present. Some organelles are membrane bound and some organelles are membrane less. जो organelle चारिपटे जाक कवरिंग रही ताको हम कहउछ membrane bound, जो organelle चारिपटे जाक कवरिंग नाही ताको हम कहउछ membrane less. किंतु in case of prokaryotic cell केवल से organelle अछि जार membrane नाही. So membrane less organelle is present in case of prokaryotic cell. तले किए से जार membrane नाही? That is ribosome. So ribosome is common both in prokaryotic cell and both in what? Eukaryotic cell. Clear? So ribosome अछि माने ribosome का हम कहउछ protein factory. Ribosome regarded as a protein factory of the cell. जेमती हमें mitochondria कहउछ, mitochondria is regarded as what? ATP factory of the cell or powerhouse of the cell. Cell भितर there are two types of factory inside the cell. One is a protein factory, that is ribosome, because ribosome is responsible for production of protein. Another is what? ATP factory or powerhouse of the cell, that is mitochondria. Both factory are present inside what? Eukaryotic cell. Okay, but in case of a prokaryotic cell, only protein factory is present. Who is that? Ribosome. So ribosome is present both in a prokaryotic cell and eukaryotic cell. So it is a common organelle. But in case of prokaryotic cell, mitochondria absent. So mitochondria absent rahile, so who is responsible for production of ATP? Because ATP is required for the bacteria. Energy is required for the bacteria, because the bacteria are doing everything. They are doing almost all functions. Okay, they are showing locomotion, they are doing reproduction, they are preparing their own food, they are doing everything like us. Okay, so they should require what? Energy. But energy factory is absent. Who is that? Mitochondria. As the mitochondria is absent, so somebody should be present in the prokaryotic cell, should be working like what? Mitochondria. Who is that? That is what? Mesosome. So mesosome कौन? ना mesosome होची cell membrane रो गोटे folding. एटा होची cell membrane. This is cell membrane. This is cell wall. Outermost covering of the bacteria is called cell wall. Inner covering is called cell membrane. The cell membrane is folded. That folding of the cell membrane is called mesosome. That mesosome acts like mitochondria. So the powerhouse of the cell is what? Powerhouse of the cell in case of prokaryotic. Powerhouse of the cell in case of prokaryotic cell is what? Mesosome. Or powerhouse of bacteria is what? Mesosome. But powerhouse of eukaryotic cell is what? Mitochondria. So powerhouse of the cell in case of plant, in case of animal is mitochondria, but powerhouse of the cell in case of bacteria is what? Mesosome. So mesosome is working like a mitochondria. So both are functionally same, but their structures are different. This is structure of a mitochondria, but this is the structure of what? Mesosome. Mitochondria is a special organelle, but mesosome is not an organelle. It is a modification of a cell membrane. So both are structurally different, but their functions are same. Mitochondria is present in eukaryotic cell. Mesosome is present in prokaryotic cell. Mitochondria is a special organelle, but mesosome is not an organelle. Mesosome is a structure. Okay, so both are structurally different, but their functions are same. Both are responsible for production of what? ATP. So as they are functionally same, but structurally what? Different, therefore they are known as a analogous organelle. Two terms are there. There are two types of terms. One is a homologous organelle, another is what?
analogous organelle. If two structures are structurally similar, then they are known as homologous organelle. If two structures are structurally different but their functions are same, then that is known as what? Analogous organelle. Clear? एठी दिटा को structure देखिए पे अलगा अलगा, they are quite different from each other. One is found in prokaryotic cell, another is found in eukaryotic cell. One is organelle, another is not organelle. It is a what? Modification of a cell membrane. So they are structurally different, but their functions are the same. Therefore, they are known as analogous organelle. This question is important. Which is analogous to mitochondria in case of a prokaryotic cell? That is what? Mesosome. Because it is the powerhouse of the cell, it is the ATP factory of the cell, like mitochondria, but they are different in structure. Therefore, they are known as what? Analogous cell organelle. Clear? So, I have to point in case of a prokaryotic cell, membraneless organelle is present, but membrane bound organelles are absent. Okay, organelles is two प्रकार membraneless, membrane bound. Membraneless किए ना, that is ribosome, तारा membrane नहीं. Okay, but in case of eukaryotic cell, both membrane bound and membraneless organelles are present. So membraneless organelle is present in case of eukaryotic cell. Membraneless organelle is also present in case of what? Prokaryotic cell. So both in prokaryotic cell and eukaryotic cell, the common organelle is what? Ribosome, because that is what? Membraneless organelle. Then we discussed in case of eukaryotic cell, mitochondria is present, that is ATP meal or powerhouse of the cell. But in case of prokaryotic cell, mitochondria absent. Its work is done by whom? Mesosome. एति पर्यंत कार कोन डाउट होची पचारो? Is there any doubt? एति पर्यंत बुझिले जाऊ. प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल जो डिफरेंस पढिले ता भीतर कार कोन डाउट होची पचारो? वन बाय वन पढ़ी पढ़ी जाऊ स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करके जाऊ जहाँ डाउट थो पचर पचर जाऊ क्लीयर कारण जो डाउट क्लीयर ना भी हईराण हो कम्प्लीटली आर यूटिलाइजेशन सबुत अच्छी आम खाली पढ़ी दौचे कि एंटायर बायोलोजी आप्लिकेशन रही यदि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल कम्प्लीटली कन्सेप्ट क्लीयर ना हईराण हो कौन कौन अच्छी डाउट पचार again repeat that doubt. What is that? What is that doubt? How to repeat करो से doubt कौन? हाँ homologous. दीटा word अच्छे homologous. हाँ homologous. दीटा word अच्छी गोटे word अच्छी homologous गोटे अच्छी analogous. जत्तो बोले दीटा structure देखा पे एका प्रकार ही थिबे they are having same origin they are looking like same but their functions are different okay गोटे जगारु बाहर थिबे गोटे प्रकार देखा जाउथिबे किंतु अलगा अलगा काम करूथिबे ताको हम कहबा होमोलोगस देखा पे समान होमोलोगस जदि से माने देखा पे अलगा अलगा ही थिबे किंतु काम गोटे प्रकार करूथिबे ताको हम कहबा एनालोगस बुझि पारलो मु कोन करिवि जो हेलिकॉप्टर अछि हेलिकॉप्टर विंग डेना को मु चढ़ई विंग्स सहित तुलना करि परिबी कारण चढ़ई जो डेनाटा ताको कोन करूची उड़ेइबार सहायता करूची हेलिकॉप्टर जो विंग्स रहिची विंग्स रहितो हेलिकॉप्टर ऊपर को उठुची सो विंग्स ऑफ हेलिकॉप्टर एंड व्हाट विंग्स ऑफ बर्ड्स आर व्हाट फंक्शनली सेम चढ़ई डेना हेलिकॉप्टर जो विंग दिटा को फंक्शन समान अछि से दिन तक हम कहू एनालोगस किंतु दोनों को स्ट्रक्चर अलग अलग सिंपली जहार स्ट्रक्चर समान दैट इज होमोलोगस जार फंक्शन समान दैट इज व्हाट एनालोगस दिटा टर्म वेरी इंपोर्टेंट टर्म टू स्ट्रक्चर्स structurally same structurally similar they are homologous
two structures, their structure are different but their function is same, that is analogous. Clear? In case of a prokaryotic cell, this is a mesosome. In case of eukaryotic cell, this is a mitochondria. Both are different from each other. This is an organelle. This is a structure, modification of a cell membrane. They are different from each other, but their function is exactly same. What is the function? Now it is responsible, mitochondria is responsible for ATP production. ATP production. But this mesosome is responsible for ATP production. The structure saman. কিন্তু যেটাকে অলগা অলগা জায়গায় বাড়াচ্ছেন যেটাকে অলগা অলগা দেখা যাচ্ছে এইটা কোন মাইটোকন্ড্রিয়া দেখা যাচ্ছে is it looking like a mitochondria? No. So it is completely different from mitochondria. It is completely different from mesosome, but both are responsible for ATP production. As both are responsible for ATP production, both are doing same function, therefore they are known as analogous. Simply functionally similar structure are analogous, structurally similar structures are homologous. Structurally similar homologous, but functionally similar what? Analogous. Clear? So this is the mitochondria function is done by mesosome in case of what? Prokaryotic cell. Next one. In case of eukaryotic cell, an organelle is present. That organelle is known as a lysosome. Lysosome. तुम्हें ना सुनिचो lysosome को आज आत्मघाती थली तुम्हारे ओडियर थिला आत्मघाती थली. Lysosome is known as a suicidal bag or sac of the cell. Suicidal bag or suicidal sac of the cell or आत्मघाती थली. That lysosome is actually responsible for digestion of a food. The food we are taking, that is going to cell, because our smallest structure is what? A cell. ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ଯାହା ପିଉଛେ everything is going inside whom? Cell. ଖାଇଲେ ତ ବଡିର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ନା, କୋଉଠି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ଷ୍ଟୋମାକ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା. ଷ୍ଟୋମାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ, ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି. ତ ଷ୍ଟୋମାକ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ପହଞ୍ଚିଲା. So the food that we are taking, either a solid food or liquid food, okay, ଯାହା ଆମେ ଖାଉଛେ ସବୁ ଜାଗା ସେଲ୍ ଭିତରେ ପଶୁଛି. Inside cell, lysosome is an organelle present. In case of eukaryotic cell, lysosome ଗୋଟେ organelle ଅଛି. That lysosome is responsible for digestion of what? Food. Okay, and that lysosome is having a covering. Repeatedly ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି organelle ଦି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି eukaryotic cell ରେ. କିଛି organelle ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କ କଭରିଂ ରହିଛି, ଘୋଡଣି ରହିଛି, ଘୋଡଣି. That organelles are known as membrane bound. କିଛି organelle ଅଛି ଯାହା ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କ ଘୋଡଣି or covering ନାହିଁ, that is membraneless. Membraneless organelle ର ଗୋଟେ ମୁଁ example ଦେଲି, that is ribosome. Both membrane bound and membraneless. Membrane bound ର example ହଉଛି mitochondria, chloroplast, lysosome. ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି membrane bound. Both membrane bound and membraneless organelles are present in case of eukaryotic cell. But in case of prokaryotic cell, only membraneless organelle is present. केवल राइबोसोम अछि, अन्यटा केही नाहंती. तले eukaryotic cell रे lysosome अछि. That lysosome is a membrane bound organelle, and that lysosome is responsible for what? Digestion of food. In case of prokaryotic cell, lysosome नाही, कारण lysosome ର covering अछि. तले covering थिबा organelle एटी नाहंती कोड in case of prokaryotic cell. Okay, तले देखो केम देखौछि structure टा. Okay, how the structure is looking like. Okay, केम the cell different structure रा सो organelle रा सो देखौछि. Okay, सबुठारु eukaryotic cell सबुठारु जोटा को छोटो structure टा, small spherical structure, that is known as what? Lysosome. Eukaryotic cell. That lysosome is responsible for digestion of food. In case of a prokaryotic cell, that lysosome is absent. Tahale somebody should be present in prokaryotic cell, okay, and doing the work of whom? Lysosome. Again I am repeating. In case of prokaryotic cell, lysosome is absent. And you know lysosome is actually responsible for what? Digestion of food. Tahale jodi prokaryotic cell lysosome nahi, who is that responsible for digestion of food? Now that is a place is present between cell wall and cell membrane. Cell wall cell membrane मझिरे गोटे जगह अछि, that place is known as a periplasmic space. Periplasmic space. That periplasmic space is responsible, okay, for what? For digestion of food. Okay, different organelles are present. Organelles plant cell हो कि animal cell हो कि bacteria हो, समस्त में organelle अछि. जो organelle टा प्रोटीन तैयारी करे सेल रे ता नाउ ribosome.
So protein is synthesizing organelle present inside the cell is called a ribosome. Clear? Ribosome ଗୋଟେ chapter ଅଛି, ଆମେ chapter ପଢିବା ribosome କୁ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ, it is an organelle that is responsible for what? Protein production. Ribosome ଯେତେବେଳେ chapter ଆସିବା in detail ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆସୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ribosome ଅଛି, okay, what is the composition of a ribosome, how ribosome is looking like, okay, ଆମେ in detail ପଢିବା, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖ, an organelle present both in prokaryotic cell and eukaryotic cell responsible for synthesis of a protein is called what? Ribosome. Clear? The ribosome is common both in prokaryotic cell and what? Eukaryotic cell. ଆମେ କହିଲେ in case of prokaryotic cell lysosome is absent. ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ lysosome is responsible for digestion of food. Okay, but in case of prokaryotic cell ନାହିଁ, ଏଟା lysosome ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ଥିବା ଦରକାର ଯେ lysosome ର କାମ କରୁଥିବ, କିଏ ସିଏ ନା, that is periplasmic space. A space is present between, okay, that is cell wall and a cell membrane, that is known as a periplasmic space. Okay, because there is different functions of lysosome. It is responsible for digestion of what? Foreign particles, invading particles. It is responsible for digestion of food particles. Okay, and it is responsible to digest other organelles. तीन प्रकार काम करुची, ये कौन करुची, बाहर जो फॉरेन पार्टिकल्स हम भीतर को आसुची, जोटा बैक्टेरिया आसुची, जोटा फंजाई आसुची, आसिक हम बॉडी रे रोग करूची, ये लाइसोसोम अछि बेली सेल भीतर तक सब डिस्ट्रॉय कर दोची. सेकंड काम कोन, आमे जो फूड खाउचे ताको से डाइजेशन करूची. थर्ड काम कोन ना, जो ऑर्गेनेल अछंती ओल्ड ऑर्गेनेल गुडाको आ प्रॉपर्ली काम करि पर नांती. राइबोसोम रो मेन फंक्शन होची प्रोटीन सिंथेसिस. If ribosome will be old and it will be not synthesizing protein, then that will be destroyed by whom? Lysosome. कारण से ओल्ड हो गलानी, आउ किछि काम करूनी. माइटोकॉन्ड्रिया रो मेन काम होची एटीपी तैयारी करिबा. If mitochondria will not synthesizing ATP, then it will be destroyed by whom? Lysosome. So lysosome is doing three functions in case of a eukaryotic cell. What are the function? Now if any foreign substance, foreign माने बाहर जे आसिला, if any foreign substance enters into our body, if any outside substance enters into our body, that outside substance may be bacteria or may be fungi or may be virus. जदि कौन से outside substance हम बॉडी भीतर पसिला, पसिकरी डिजीज कॉज कला, डिजीज कॉज करिबा पूर्वरु हम सेल भीतर जो लाइसोसोम अछि, that lysosome will break those outside substances. जो बैक्टेरिया जो फंगी हम सेल भीतर पसुची ताकू लाइसोसोम चाहिबो भांगिया पेंगे. जदि लाइसोसोम भांगी देला ताल there will be no disease. ଯଦି ଲାଇସୋसोम ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ବଡିରେ ଡିଜିଜ ହଉଛି. ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସେଲ ଭିତରେ ପଶୁଛି, there is a fighting between bacteria and lysosome. If lysosome is breaking bacteria, then we are not having any disease. If lysosome fails breaking bacteria, then we are having what? Disease. Clear? ये गोटे काम कला. सेकेंड काम कौन कला, आमे जो फूड खाउचे फूड को से डाइजेशन कला. थर्ड काम कला, जो सेल ऑर्गेनेल का बॉडी रे बहुत दिन ले रही गलेनी प्रॉपर्ली काम करनांती ताको कोन करदा डिस्ट्रॉय कर देला. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल रे लाइसोसोम अछि बिली ए सब फंक्शन कला. किंतु प्रोकैरियोटिक सेल रे से तो निज खाद्य तैयारी करछि, निज खाद्य को खाउछि, तला हजम करूछि, तला किए से रहिछि खाद्य को हजम करिया पेंगी. हम सेल रे प्लांट सेल लाइसोसोम थिला. Lysosome was present in plant cell and animal cell and it was responsible for digestion of food. But in case of a prokaryotic cell, the lysosome is absent. Then who is that responsible for digestion of food? And that is what? Periplasmic space. So this is a structure present in between the cell wall and the cell membrane responsible for what? Digestion of food. So this is अलगा अलगा. Lysosome होची, lysosome is a small spherical structure present in a eukaryotic cell. Okay, it is an organelle, but it is not an organelle, it is a place. So they are structurally different, but their functions are the same. Both are responsible for digestion of food. One is present in a prokaryotic cell, another is present in what? Eukaryotic cell. So they are structurally different. Their origin is different, but their function is the same. What is that function? Now both are responsible for digestion of food. So they are also known as analogous organelle. Already ମୁଁ କହିଲି जो structure गुडाक देखिया पिंग अलगा अलगा किंतु function same, that is analogous. So analogous of a lysosome in case of prokaryotic cell is what? Periplasmic space. Analogous of a mitochondria in case of prokaryotic cell is what? That is a mesosome. So mesosome and what? That is your periplasmic space. They are analogous in case of what? Prokaryotic cell. Clear? So this is all about the difference between prokaryotic cell and what? Eukaryotic cell. Okay? आ भीतर वर्तमान कौन सी डाउट होची पिले पचार. If any doubt, then ask me.
कौन अच्छी डाउट भीतर पचार प्रोकैरियोटिक सेल आम जी पढ़िले सब जाक हूँ कनसेप्चुअल बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ जदि टिके भल कि शुण इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कारण ये पाठर आप्लिकेशन एंटायर बायोलॉजी अच्छे आपको न बुझी पारे कॉलेज जो बस सार कौन कहते किसी बुझी पार न सब जगह आपको पिला जीवा पूर्व कॉलेज को भल कि बुझिकी जाती ओके आ भीतर कौन डाउट अच्छी पचार जी आम पढ़िले भीतर सब कौन डाउट अच्छे झारसुगुड़ा नो डाउट केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा पिला कौन डाउट अच्छी कह ओके थैंक यू एंड निराकारपुर झारसुगुड़ा केन्द्रापड़ा किसी डाउट नहीं निराकारपुर पिला कौन डाउट अच्छे पचार मेम्ब्रान मेम्ब्रान जो कवरिंग टा मु पिंधी जैकेट टा एटा हूँ मोर गोटे मेम्ब्रान तुम सब गोटे सार्ट पिंच सार्ट जो पिंच बॉडी ऊपर जो कवरिंग अच्छी दैट इज मेम्ब्रान तर ऑर्गेनाइल अच्छे बहुत प्रकार जहाँ चारिपट जाक गोटे कवरिंग अच्छी गोटे घोड़णी अच्छी मेम्ब्रान कहूँ जार ना मेम्ब्रान लेस और कौन सिंपली जो घोड़णीटा कवरिंग आम कहूँ मेम्ब्रान जार अच्छी मेम्ब्रान बाउंड जार ना मेम्ब्रान लेस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल